now in life? सभी साथियों को जिंदाबाद, जय भीम, हुल जोहार, सतरंगी सलाम. NAPM welcomes you to the second part series of Yuva Samvad. Yuva Samvad is a space where young people are coming together or have come together, and it's an attempt to listen to the young voices from across the country on various issues. And this particular month, in the month of March, remembering the collective struggles of International Women's Day, the Yuva Samvad is hosting a series of conversations around topics or issues that affect many of us, and rather not many, but everybody in this country. तो सभी साथियों को जिंदाबाद. मेरा नाम आभा है. NAPM की तरफ से हम आपको यहाँ पे इनवाइट करते हैं, युवा संवाद के लिए इनवाइट करते हैं. पिछले कई महीनों से NAPM में युवा संवाद करके एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जैसे युवा साथी लोग आके अपने जो सोच हैं, अपनी जो खुद की जिंदगी के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो गुजरी चीजें हैं, उन चीजों को आगे रखते हुए हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं. और ये मतलब भारत के तमाम जगहों से लोग आते आए हैं. और इस महीने, मार्च के महीने, अंतर्राष्ट्रीय जो नारी विमेंस डे को याद करते हुए एक सीरीज NAPM यहाँ पे होस्ट कर रही हैं. और बिल्कुल सावित्री माई को भी याद करते हुए परसों उनका मतलब एनिवर्सरी है, तो उनको उनकी जो सावित्री माई की जो एक कंट्रीब्यूशन रही है, उनका जो हिस्सेदारी रही है, मतलब पूरे न सिर्फ महाराष्ट्र में, लेकिन उन्होंने जो काम किया है फातिमा शेख के साथ और ज्योतिराव फुले के साथ, और वो एक मूवमेंट उन्होंने जो खड़ा किया है, उनको भी याद करते हुए सभी साथियों को यहाँ पे फिर से हम जिंदाबाद कहते हैं. जैसे हम कह रहे थे, इंटरनेशनल विमेंस डे है. हम NAPM ने एक सीरीज यहाँ पे होस्ट किया है. और पिछले हफ्ते सैटरडे, मतलब हर सैटरडे को मिलते आ रहे हैं कई मुद्दों के बारे में बात करने के लिए. Every Saturday NAPM has been trying to host a series or panel where we are trying to talk. तो पिछले हफ्ते, या फिर पहले हम ये कहते हैं कि ये जो लार्जर आइडिया ये है कि फेमिनिस्ट फ्यूचर का मतलब नारीवादी भविष्य की हम सब लोग किस तरीके से हम लोग एक नारीवादी सोच के साथ आते हैं और क्या भविष्य देखते हैं. What are the kind of feminist futures each one of us has been seeing or trying to see. इस टॉपिक के नीचे पिछले हफ्ते जो एक टॉपिक था, वो था पर्सनल इज पॉलिटिकल. जो व्यक्तिगत है वो राजनीतिक है. और उसमें देश से, इस पूरे देश से, इस मुल्क से युवा साथी जुड़े थे हमारे साथ, और उनकी बात उन्होंने रखने की कोशिश की और हम लोगों ने सुनने की कोशिश की. So last week we had the topic was the personal is political, and many of our friends and comrades from across the country joined us, and we tried to listen to what each one of us have to say. Today, the second part of the series is equity in education. तो उस टॉपिक को हम let's see कि हम मतलब हमारे साथ जो हैं, हम क्या जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको क्या वो क्या रखने की कोशिश कर रहे हैं और हम क्या सीख सकते हैं.
So in education, and let's try to listen to what our friends and comrades have to share. And the session will be moderated by Sargam Sharma. ये जो आज का जो सेशन है वो मॉडरेट करेंगी सरगम शर्मा. सरगम शर्मा पटना की हैं. वो अभी यहाँ पे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दिल्ली में अपना एमफिल कर रही हैं सोशियोलॉजी में, और उनका एरिया ऑफ फोकस है सेक्सुअल वायलेंस. एंड सो सरगम शर्मा कम्स फ्रॉम पटना. शी इज डूइंग हर एमफिल इन सोशियोलॉजी from Delhi School of Economics, and her topic relates, or the area of her focus is sexual violence. So with that, she will be moderating and she will be talking to our friends. So Sargam, the floor is all yours. Welcome to Yuva Samvad. Thank you so much, Abha. Thank you, Meera, and thank you for NAPM for giving me this opportunity, because मतलब मेरा काम ही है मतलब जेंडर के बारे में सोचना, बट एक जो बातचीत करने मिलती है उससे जो मतलब जो नए मतलब डोर्स खुलते हैं आपके थिंकिंग में, वो और किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है. सो विदाउट मतलब मैं टॉपिक के बारे में ही आती हूँ और फिर मैं थोड़ा अपनी हमारे स्पीकर्स को इंट्रोड्यूस करूंगी. तो आज का जो सेशन है वो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में है. एंड कि जैसे आभा ने कहा कि इन दो एवेन्यूज को लेके एक फेमिनिस्ट फ्यूचर कैसे इमेजिन किया जा सकता है. और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट जो है, ये जब भी हम ये दो टर्म सुनते हैं तो उसका एक बहुत ब्यूरोक्रेटिक इमेज हमारे दिमाग में आता है. But we know as women and people from marginalized sections know this very well, that education and employment are not just out there issues that people have to solve. मतलब जीवन जीने का एक जरिया बन जाता है. आप जब existing norms को challenge करते हो तो आपका education और जो आपका employment होता है वही आपको वो करने लायक बनाता है और आपको एक जीने का तरीका सिखाता है. तो उसके लिए उस हिसाब से मैंने सोचा कि जो एक बहुत ही पेक्यूलियर, बहुत ही एक अजीबोगरीब सिचुएशन इस देश में पैदा हो गई है इन द रीसेंट पास्ट, उसको मैं थोड़ा सा आउटलाइन करूंगी और उसके बाद हम अपने स्पीकर से सुनेंगे. तो वेरी रिसेंटली देयर वाज अ बिग न्यूज दैट केम आउट एंड आई वाज शॉक्ड. मतलब मैं बहुत ही मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि क्यों इसके बारे में बिल्कुल ही बात नहीं हुई, ना तो मीडिया में, ना तो एकेडमिक सर्कल्स में, ना ही पॉपुलर डिस्कशंस में. और ये बात थी कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया में जो सेक्स रेशियो है ऑफ मेल्स टू फीमेल्स वो रिवर्स हो गया है. नाउ देयर आर 1020 फीमेल्स फॉर एवरी 1000 मेल्स इन द कंट्री. एंड दिस इज बट ये देख के तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही जरूरी बात है, क्योंकि so much of the history of the feminist movement, as we know, has been around these issues of female infanticide, of female mortality rates, like women's nutrition, their access to healthcare, and there are some strides that have been possible because of which we now have this figure. But this is not simply a cause for celebration, but this is a moment to reflect on the past of this nation, the contemporary moment, and how we can respond to this as feminists. So the overall sex ratio agar बढ़ भी गया है, the birth sex ratio is still declining. तो जो ओवरऑल सेक्स रेशियो अगर बढ़ा है, इसका मतलब माइग्रेशन पैटर्न्स में कुछ चेंजेस आए हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन. एंड जो एक और चेंज आया है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में. दिस इज, एज वी मस्ट ऑल नो, दिस इज अननोन टू नोबडी, दैट women's labor subsidizes the economy of the whole nation. And the fact that there are now more women now, and the only one who's able to reap benefits of it is actually the market and not women themselves. ये इसलिए भी पता चलता है क्योंकि 2020 में पैंडेमिक की शुरुआत में विमेन का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में गिरकर 16% आ गया था, और 1990 में जस्ट बिफोर लिबरलाइजेशन वो 30% पे था. तो और जस्ट ये बात नहीं कि विमेन लेबर फोर्स में कम हो गई हैं, जो जॉब प्रिकेरिटी होती है वो हर तरीके से बढ़ गई है. आपके वेजेस कम हो गए हैं, आपके वर्किंग कंडीशंस और भी चैलेंजिंग हो गए हैं. एंड दिस वी क्लियरली नो फ्रॉम द काइंड ऑफ
voices that have emerged against sexual violence, at least in academia. और आपका जो आपके लेबर से आपको बेनिफिट होता था वो हर लेवल पे कम हो गए हैं, लेबर रेगुलेशंस डाइल्यूट कर दिए गए हैं. तो नॉट जस्ट दैट देयर आर फ्यूअर women in the workforce, the women who are working in extreme precarity. And the second thing which is about education, which is even more peculiar, जो और भी एक अजीब सी चीज हो रही है, वो ये है कि जो ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन हुआ था, जिसको AISHE कहते हैं 2019 में, उससे पता चला कि हायर एजुकेशन के इनरोलमेंट में women, there is an 18% increase of women in higher education enrollment, whereas there is a continuing decline in primary and secondary education of women. वो 2016 से एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे है प्राइमरी एजुकेशन, और हायर एजुकेशन एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे है. ये एक बहुत ही अजीब चीज है, जिससे ये हमें पता चलता है कि जो औरतें हैं वो वेज अर्नर्स तो बन रही हैं, वो काम उनको मतलब वेजेस अर्न करने का काम तो मिल रहा है, लेकिन जो एजुकेशन का जो बेनिफिट होता है, एक अपना मटेरियल बेनिफिट, एक अपना स्पिरिचुअल बेनिफिट, जो एजुकेशन, जो जैसे अंबेडकर एजुकेशन के बारे में लिखते हैं कि एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए जो एक मैकेनिज्म होता है एजुकेशन, वो औरतों से और भी कम होते जा रहा है. उनको वोकेशनल ट्रेनिंग्स मिल रही हैं जिनसे वो सिर्फ सबसिस्ट कर सके. तो ये भी एक बहुत ही अजीब चीज हो रही है. और कॉलेजेस में अक्रॉस इंडिया, apart from UP, there are more women in colleges than men. And but again we see कि employment की जब बात आती है तो औरतों के लिए वहां भी जगह नहीं है. तो there is this buffer zone जो create हो गया है आज इस country में, where there are many trained women, there are women in all kinds of avenues, but their prospects are still worse than ever before. 1990 में सूजी थरू ने एक ऐसे लिखा था, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल ऐसे था. उसमें उन्होंने लिखा था कि सडनली विमेन आर एवरीवेयर. ये उन्होंने लिखा था आफ्टर द लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, वेयर देयर वर सर्टेन चेंजेस दैट वर कमिंग इन. तो आज भी हम वैसा ही एक सिचुएशन देख रहे हैं, where the presence of women and the invisibilization of their work and their opportunities, actually जो ये फसाड है डेवलपमेंट का, उसको बिल्कुल एक्सपोज कर देता है. तो with this, I think it is very important for the feminist movement to think through the more complex situation of gender today in the country, and who it imagines it's subject to be, and what kinds of future might be available for all women. And as we know, these the जो उनका रोजमर्रे का जीवन औरतों का इसलिए भी और मुश्किल हो गया है, क्योंकि आज जिस मोमेंट में इंडिया है, जहाँ एक मेजॉरिटेरियन हिंदू गवर्नमेंट पावर में है, उससे जो मार्जिनलाइज विमेन है वो और भी मार्जिनलाइज हो जाती हैं. इवन दो देयर माइट बी ग्रेटर अवेयरनेस, द एवेन्यूज एंड द opportunities still continue to decline for all women, and especially for women who come from marginalized sections, be it religion or caste or gender identity. तो इसके साथ ये कॉन्टेक्स्ट में देना चाहती थी कि एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के सेक्टर में क्या आज सिचुएशन है. And but with that, I would like to call our first speaker, who is Reem. Reem is an assistant professor at Maharajas College in Ernakulam. She will be speaking to us about some of her personal experiences as a working woman, and what kind of insight that can give us to the same to what we are speaking about today. So with that, I would like to call Reem and to speak, and then maybe we can take this forward. Enter mute. Currently unmuted. Alt plus A button to activate. Hello. Press space bar. Hello, everyone. So thank you so much. Yeah, I am Reem. So thank you so much for this opportunity. Alert. And Tech I am support has started screen. really grateful to NAPM and its organizers for giving me this opportunity to share a couple of my experience as a visually impaired Muslim woman. A couple of experiences that I have had over the past few years, professionally as well as a student on the campus spaces and as part of a general public. So
first and foremost, I would like Alert. to Shambhavi make this Collective has joined. point that disability is uh, disability cannot completely be identified as a woman's problem, Alert. Sangrami though the disabled person is a woman, it is also important to consider various nature of disabilities that this person is suffering from, encountering, and what kind of background this person is coming from, be it caste or religion. So it is the issue is so complex, and the issue is multifarious, multidimensional. A lot of things need to be considered when we talk about disability, particularly a disabled woman. And So I would like to bring your attention to a couple of instances that I've come across, or that sought my attention. Uh, uh, Maybe one among them was in 2017, when I saw a letter that was being circulated to as part of a signature campaign, and this letter is written by a physically challenged woman, and this was to be submitted to the then railway minister, central minister. So in this letter she was saying that because of these public places are not disabled friendly, particularly railway stations and inside the train. She's been encountering a lot of problems. Sometimes uh, she had to be she has to be lifted by someone else into the train, and she needs to seek somebody's help uh, to to get herself at the place in the train, in the berth and all. So during such situations, there was instances of sexual abuses, and she was even grouped by many when she was being lifted, and she was being lifted inside the train, carried inside the train. And as wheelchairs cannot be used inside the train, she uh, not only herself, a lot of physically challenged people. Reem, I'm really sorry to disturb you, but could you hold the mic a little away, because wo thoda, there's a little bit of a background noise because of the mic. Okay, okay. Now, Thank you. Yeah, that's fine now. Alert. Rami Chandra has joined. yeah. So she was saying that, as she cannot use Alert. washrooms, Ramya A has joined. it is really difficult for her to travel in the train for such a long time, maybe for hours, because they can't use the washrooms because they are not physically challenged friendly. So this points towards the issue of accessibility. And even if somebody is trying to come forth, somebody is trying to come into the mainstream, either to work or to get educated, or to to speak for themselves. So this is the situation that we are facing in the public spaces. And we have actually students in our college also. We have actually students, because we have a reservation seats are being reserved for the physically challenged people particularly. So we have students coming from various backgrounds, and uh, particularly girls, their parents will have to stay with them to get them to the classroom. So uh, sometimes the paths would be really uneven, so the electric wheelchairs Alert. Ramya A has left them. cannot be taken inside, and the parents will have to wait until the class gets over. So these are Alert. Redmi noting. these are the issues that Alert. needs Redmi noting. the attention of the policy makers and the attention of the administrators. Some kind of way out needs to be there permanently. Some kind of a system should be in place to help out these students. Otherwise they'll definitely drop out of their course and go away. So when the lockdown started, when we all decided to go online, what happened was the few uh, very marginalized group of intellectually challenged students got completely alienated from the system of education, because they are the one who could only be trained in person.
So in the first initial part of the COVID lockdown, in the first wave, during the first wave, though the cases were not very high, at least in some parts of India, uh, even though the cases were not very high, none of the educators considered this thing of, like, maybe meeting these students in person and giving them some kind of training. But that did not happen. Even I have experience of one or two of my students after the lockdown, when the college reopened, they stopped coming to college, and when I inquired about them, they had already stopped their education, they dropped out. So these two kids were actually the ones with intellectual disabilities and behavioral issues, and a little, like, some sort of autism. So and even their parents complained of that they could not, when these students sit at home, when these children sit at home, they could not go for their jobs. Like, some would be daily wage earners, so they cannot go for their jobs when these children are at home, because they would need somebody to look after these kids. So if if a proper trainer was being allotted to them, some kind of their issues could have been resolved. So this is how the children drop out of their courses, when these facilities and amenities are not being provided properly, and when they don't have a proper training, or when they don't have, like, trained person to deal with their cases, to deal with their issues. So when the new education policy came up, it did not talk about the curriculum, how the curriculum is going to be amended for the intellectually challenged kids. Mm, because I feel that, like, definitely the system should be integrated. The children should be should be part of, particularly in higher education, the children should be a part of the uh, uh, integrated system. Like, they should sit with the non-disabled students and get their education done. But definitely some alteration needs to be done with regarding curriculum, evaluation, and testing, and uh, you know um, dealing with the topics that they had to do with. So um, in the sense, that kind of a thought process somehow was not there to be seen when this NEP was announced. And what happens is that these kids also sit with the others in the classroom and generally lose the attention of the facilitators. They just like they the facilitators don't get the attention of these kids, and they don't pass the exams continuously, and hence they just drop out of the course. They just drop the course and go away. So but then this is this is this this shows, definitely shows the failure of the system, the failure of the curriculum. So some kind of alterations can be done with regarding their training. And maybe I'm not saying that the syllabus should be completely uh, uh, completely uh, uh, altered or completely changed for these kids, but then some alterations can be done when we teach them humanities or social science or anything. um, uh, uh, it is definitely, it is true that these kids can also respond in their own ways. So it is really important to make a curriculum considering their own world, the world that they are creating for themselves, and the language in which they are communicating. So that kind of amendment or that kind of a thought process needs to be is necessary, particularly for these kids. And uh, uh, yeah, so even considering the campus spaces, I also feel that these spaces are not completely disabled friendly. Even if we say that lots of ramps are being made, lots of lifts are being made, these spaces are still not disabled friendly. So it is not only like material support that is what the disabled kids needed, but also
support with regarding curriculum, intellectual supports, and all Reem, these. sorry to disturb. Reem, can you please speak a little bit away from the microphone and a bit louder? How is it now? Yeah, it's better. Can you speak something more? Let's just try once because there's a lot of background noise. Oh, I'm so sorry. I do not know why this is happening. Right now? Right now, it's better. Okay. Sorry, because I'm holding this microphone in my hand and This is speaking. better. This is better. So maybe because of that. Yeah, please continue. 1 second. Let me put off the fan also then. Sorry. Yeah, no problem. So yeah, I was talking about the various issues the disabled challenged students are facing on campus with regarding academic issues. And being a visually impaired person, I know that even now students are facing lack of materials, uh, particularly e-materials on campus to deal with their education, to deal with their studies. And people are facing, like, apart from the metropolitan cities, maybe in Delhi, or maybe in Bombay, or maybe in some part of Kerala, except these cities, if we go to the interior, definitely students are facing the issue of lack of e-materials and also the lack of softwares that are required for their studies. So, and definitely it is true that among the impaired children, very few girls are still uh, going for their studies. When we take the ratio, the statistics, it is very much evident that very few girls are going to pursue their higher education. And even among them, as earlier I said, those examples, both the students were girls. Those who dropped out after the lockdown from the college because of the lack of proper trainer for them. So both the students were girls. So uh, like, it is hard to take to heart that these children and their parents are taking a lot of effort to get them into their colleges, into their campuses, and to get them into their studies. Still, they are not being able to do their education properly. They are not being able to pass the examination, because the examination is, for these kids also, the examination is done on a general basis, like as it is done for the others. So that shouldn't be the case. A different system of evaluating should come into existence. A different system of coaching should come into existence for intellectually challenged students. So that's what I was trying to say. And definitely with regarding the materials also, even for the visually impaired people, still we have to fight for our material sometimes, even though we are actually copy left, like we can read and record and keep books in any format. Alert, Udita Rubina has joined the meeting. Even the one that are published recently, we have all the right to keep them in any accessible format. Still, we have to fight with the publishers and sometimes with the authors with regarding this right, because sometimes people come and ask us and question us, like, how could you record this book, and how could you keep this book in a recorded version? You are not supposed to do this. And also then we always have to show the Copyright Amendment Act of 2013, which exempted persons with disability from this act. So Alert, Radmi has left the meeting. so a lot of awareness issues are there, both on the academic space as well as in the as well as outside, as well as in the general public. Like, even I had to face a couple of instances where I have to explain my right to
hold an ATM card to a bank manager, and my right to get a ticket issued, a train ticket issued on a concession certificate to somebody in the railway station, some staff in the railway station. So these people are there, but they are not aware of the rights of this marginalized communities, particularly disabled. So disabled are the, though we talk a lot about the disabled people, but disabled are the one who do not catch the attention of the general public, or do not catch the attention of the mainstream. Most of the problems of the disabled are being uh, told by, in the sense, definitely the problems of the disabled should be voiced by the disabled, and sometimes only disabled can voice some of their problems. But when when considering those who face intellectual disabilities, definitely they can hardly raise their voices for them. Uh, some of them are doing in their within their limited capacity, but yeah. So and so I always feel that we need to have electoral representatives. Otherwise, then we'll have somebody in the parliament and somebody in the state assembly to talk for us. Otherwise, like, there'll be fights about should we be called Divyang or should we be called differently abled or disabled. So instead of which, like, uh, you know some better work needs to be done. So that's what I feel. And definitely there is another issue of disabled women uh, shifting into the rehabilitation centers after their education, because as they are not getting any job opportunities. Definitely with regarding the job opportunities apart from government jobs, it is like, disabled men have more opportunities comparing to women. So that is there. Alert. Shreya So Santosh has joined the meeting. what happens is that after their education, then if there is nobody at home to look after or to take care of them, these disabled women, they'll have to move to the rehabilitation centers forever. So rehabilitation centers should not be a permanent settlement. From the rehabilitation centers, some initiative should be there to promote these women to go out and work and earn for themselves. So that kind of initiatives should be there, should be evoked. So that is another issue. And yep, being a disabled Muslim woman, I know that when I went to EFLU in 2006, I was the only one disabled Muslim woman on campus. Now the inflow is increasing. That's true. So it was definitely a refreshing experience for myself. It was a learning experience for myself and a lot of my friends and even teachers about dealing with the issue of disability. And we've involved in a lot of issues like both academic and non-academic, and even issues like rearing pets on campus, etc. So how these things are becoming hindrance to comfortable and easy moving mobility for the disabled people on campus. So before concluding, definitely I would like to assert my solidarity to the children in Karnataka who are still being denied of their right to be educated because of their attire. So this has been increasing. Even today I saw some news about children are being uh, forced to sit outside and listen to the lectures because of their attire. So that problem is a severe issue, and that is definitely a personal thing for me. So because yeah, I do not know how can people shun away their attire, how can people shun away their cultural practices. So that is there. So I express my solidarity to those kids who are denied of their education. And definitely I believe that some system would come in place which includes
every other different element in the exist within the society. Thank you so much. Alert. Tech support has stopped screen share. Zoom meeting. Thank you so much, Reem, for sharing these insights and your experience with us. मैं बस थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ हिंदी में रीम ने जो बोला. आई होप आई कैन डू इट जस्टिस. तो जैसे रीम ने बताया कि उन्होंने शुरू की ये बोलकर कि डिसेबिलिटी एक विमेन्स इशू सिर्फ नहीं है, ये एक बहुत ही पेचीदा और कठिन इशू है जिसपे बहुत तरीकों से सोचने की जरूरत है. जो डिसेबल्ड लोग काफी बार उनको अगर मदद चाहिए होती है, जैसे रीम ने एक डिसेबल्ड विमेन का एग्जांपल दिया जो व्हील चेयर यूज करती थी, और जब उनको मदद चाहिए होती थी व्हील चेयर, जैसे अगर उठाना हो स्टेशन पे जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी का, तो वहाँ पे बहुत बार उनको सेक्सुअल अब्यूज फेस करना पड़ा. और जहाँ तक कॉलेजेस की बात है, उन्होंने बताया कि पैंडेमिक के बाद जब सारा एजुकेशन ऑनलाइन हो गया, तो इसके वजह से कितना और भी जो एक एक्सेस का जो एक वो था उसमें और भी गैप बढ़ गया. और पैंडेमिक के बाद दो लड़की फीमेल डिसेबल स्टूडेंट्स ने ही ड्रॉप आउट भी किया. और उन्होंने ये भी बताया कि जो एनईपी करिकुलम अभी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, वो उसमें कोई पॉलिटिकल विल है ही नहीं डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन में इक्विटी लाने का. एक तो वो ऑनलाइन एजुकेशन से और भी वो बढ़ गया है गैप, प्लस जो एक पॉलिटिकल विल की कमी है उससे भी हो गया है. और जो एक तीसरी चीज उन्होंने बताई कि देयर इज जो एक प्रेजुडिस या लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं, जैसे वो अगर उन्होंने बोला कि वो कॉपी लेफ्ट है, मतलब वो जो भी किताबें होती हैं उनको कॉपीज बनाते हैं ताकि वो ज्यादा एक्सेसिबल हो जाए, या रिकॉर्डिंग्स बनाते हैं, तो वो भी उनको लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि ये आपने क्यों किया, और बहुत बार वो समझने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं. और उन्होंने बताया कि क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी समटाइम बहुत ही कम होती हैं डिसेबल्ड वुमेन के लिए, तो उनको बहुत बार रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाना पड़ता है आफ्टर फिनिशिंग देयर एजुकेशन. और ये एक परमानेंट मतलब ये एक ही उपाय उनके पास बचता है एट दैट पॉइंट इन देयर लाइफ, और ऐसा नहीं होना चाहिए. ये और उनको ऐसा लगता है कि ये इशू पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से ही ठीक हो सकता है. अगर गवर्नमेंट में डिसेबल्ड लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता तो शायद ये इस प्रॉब्लम में कुछ मुनाफा आता. लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं है, सारी डिबेट्स इसी चीजों के बारे में, बहुत सारी बातें होती हैं कि दिव्यांग बताएं या क्या बोले, लेकिन जो एक्चुअली उनको मदद चाहिए होती है वो काफी बार नहीं मिल पाती है. और रीम ने अपना जो टॉक है वो कर्नाटका में जो बच्चों को स्कूल में या कॉलेजेस में नहीं जाने दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ देयर अटायर, बिकॉज ऑफ व्हाट दे आर वेयरिंग विच इज द हिजाब, उनके साथ उन्होंने सॉलिडारिटी दी है. और उन्होंने कहा कि उनके लिए एक बहुत ही पर्सनल इशू है बीइंग अ मुस्लिम डिसेबल्ड वुमन हरसेल्फ. सो थैंक यू रीम सो मच फॉर शेयरिंग दिस विद अस. और एंड ये सिर्फ आई थिंक उन्होंने बोला कि छोटी जगहों में ज्यादा होता है, वहाँ शायद बड़ी जगहों में कुछ तो हो, शायद एटलीस्ट आर्किटेक्चरल सपोर्ट हो. बट जैसे उदिता दी भी जानती हैं कि जेएनयू में पिछली 3 साल पहले एक यूजीसी गजेट आया था जिसने एमफिल पीएचडी में एडमिशंस के जो पायदान होते हैं वो बिल्कुल बदल दिए थे. इफेक्टिवली उससे जो व्हाट वुड हैपन बिकॉज ऑफ द यूजीसी गजेट इज दैट द so PWD students, that is people with disabilities, get 5% reservation throughout the university. That would be thoroughly compromised. So against this, the PWD students of JNU had filed a case. They won the case, and they were the ones who had to take up the issue themselves. And not only did they get the 5% for the PWD students, but they essentially made sure that the draconian UGC gazette, which would completely compromise the reservation system and the representation of SC, ST, OBC students in university, was completely junked because of the initiative that they took. तो उसके लिए तो that I thought was important in keeping with what Reem had to say.
We'll come back to questions for Reem later. And now perhaps we can move to Riya. Riya is our second speaker. And Riya is a fellow at Teach for India. She's passionate about education and about children. She's done media studies from Manipal, and she'll be also talking about some of her experience as an educator in low income schools in Bangalore. So Riya, please. Good evening, everyone. I hope everyone's doing well. सबको सब ठीक है considering everything that's going on around us. तो मैं पहले तो ये बोल के शुरू करना चाहूंगी कि मैं बहुत नई हूँ इस टीचिंग फील्ड में. बस 2 साल हुए हैं, फेलोशिप कर रही हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस और जो भी मैं कहना चाहती हूँ, जो भी मैंने देखा है, वो सिर्फ इन 2 सालों में देखा है. तो आई वुड इतना ज्यादा भी एक्सपीरियंस नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा थियोरी हैवी कंक्लूजन्स दे पाऊँ, लेकिन अपने एक्सपीरियंसेस और अपने ऑब्जर्वेशंस को जरूर रखना चाहूंगी. तो मेरे फेलोशिप के दौरान पहले मैं एक समरी देना चाहूंगी कि फेलोशिप होता क्या है. तो टीच फॉर इंडिया के फेलोशिप में लोगों को रिक्रूट किया जाता है इंटरव्यू के दौर पे और डेमो क्लासेस के दौर पे इवैल्यूएट करके उनको पिक करते हैं. 8 वीक का क्रैश कोर्स देते, जो हम बीएड में 3 साल पढ़ते, वही 8 वीक में हमको पढ़ा देते. एंड दे ट्रेन अस कि सोशल साइंस कैसे पढ़ाते हैं, मैथ कैसे पढ़ाते हैं. एंड देन दे रिक्रूट अस इनटू स्कूल्स, जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं या फिर लो इनकम प्राइवेट स्कूल्स होता है. एंड एज वी ऑल नो, वहाँ का डेमोग्राफी ऐसा है कि ज्यादातर मोस्ट ओवरवेलमिंगली लार्ज पॉपुलेशन इज बहुजन किड्स और किड्स फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज. तो हमको वहां पे रिक्रूट किया जाता है 2 साल के लिए. अब टीच फॉर इंडिया का एम ये है कि तुम 2 साल एक क्लास में रहो. वो बच्चे जो तुम्हारे अंडर आएंगे, 30-40 बच्चे आएंगे, उनका प्रोग्रेस तुम्हारे हाथ में. Their reading levels, their well-being, and their academic progress and everything is on you. Now, this is what it generally is, a general idea of what the fellowship is. अब मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको क्लासरूम एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहूंगी और स्कूल एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहूंगी कि गवर्नमेंट स्कूल्स में चीजें होती कैसी है और लो इनकम प्राइवेट स्कूल्स में चीजें होती कैसी है, और पेडागोजी के बारे में, जो कि मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है. मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कि हम कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को और क्या पढ़ाते हैं, ये सबसे ज्यादा मेरा इंटरेस्ट है. तो मैंने अपने 2 साल में 3 स्कूल्स में पढ़ा चुकी हूँ. रीजंस आर वेरीड कि कभी एडमिन प्रॉब्लम होता है, कभी कुछ और होता है, कभी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है. पहले के 2 स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल्स थे और अभी मैं लो इनकम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हूँ 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को. माय फर्स्ट 2 स्कूल्स मैंने 8th और 9th के बच्चों को पढ़ाया था. अब जैसे हम बात, आज का डिस्कशन जो है एजुकेशनल इनइक्विटी के बारे में है. इनइक्विटी का तो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन होता है एजुकेशनल इनइक्विटी का कि every student should have equal access to academic resources, and that would be including but not limited to school supplies, teachers, books, technologies, support systems and everything. This is like the textbook definition of educational inequity. तो ये एजुकेशन इनइक्विटी यानी ये सब चीजें हमारे पास नहीं है, बच्चों के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. अब ये सुनने में जितना सैड लगता है, उससे कहीं ज्यादा खराब सिचुएशन है और रियलिटी में भी. And when I speak of inequity, when I see discussions about online education or education in general happen, कि अभी पैंडेमिक की वजह से जो एजुकेशन सडनली ऑनलाइन हो गया, सब बोल रहे थे कि बच्चों को ऑनलाइन कर दो, उनका एजुकेशन में ही होना चाहिए हमको. बहुत सारे एडटेक कंपनीज ने और स्कूल्स ने उनका मार्केटिंग कैंपेन भी बना दिया था इस चीज से कि हमने इस मुश्किल दौरान में भी हमारे बच्चों का एजुकेशन बरकरार रखा, चलते गया एंड ऑल ऑफ दैट. वहां पे हमारा डिस्कशन इतना प्रिविलेज्ड पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट होता है ना, कि जब हम बातें करते कि हमने तुरंत 1-2 महीने में सारे बच्चों को ऑनलाइन लाया, हमने हमारे बच्चों का एजुकेशन खोने नहीं दिया. इट्स अ वेरी प्रिविलेज्ड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि द स्टूडेंट्स आई टीच who come from the margins of the community, in terms of class, caste, gender, everything. So the students that I teach, उनके लिए struggle शुरू होता है इस बात से कि their parents lost their job during the pandemic, which would mean that they can't afford devices,
which would mean that they can't afford internet services, which would mean that they have no other option other than losing 8-9 months of education. उनके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं. बात इस बात की होती भी नहीं है कि हमारा एकेडमिक एक्सीलेंस हमने कितना किया ऑनलाइन में. ऑल ऑफ दैट डजंट मैटर, क्योंकि मेरे बच्चे जो है 8 महीने 9 महीने उन्होंने स्कूल अटेंड ही नहीं किया. अब टीच फॉर इंडिया की तरफ से वी हैव गिवन डिवाइसेस एंड ऑल ऑफ दैट, बट दीज आर ऑल बैंडेड सॉल्यूशंस because we couldn't reach out to some other students क्योंकि कुछ लोग गांव चले गए थे. We all saw what the migrant labor situation was in the country. It was a very very sad sight. A lot of them left with their kids. अपने बच्चों को लेके चले गए, स्कूल छोड़ दिया का सारे बच्चों ने. 5th स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड में, 10th तक भी मुश्किल से बच्चे आजकल एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, राइट? So that is the reality on the ground. That education inequity का सबसे खराब फॉर्मेट अब इमेजिन करो वही होता है ग्राउंड लेवल में. अब ऐसी भी बात नहीं है कि सरकार को पता नहीं है कि हाँ हमारे इस स्कूल में रिसोर्सेस नहीं है या फिर इस स्कूल में काम ठीक से नहीं चल रहा है. इट्स जस्ट दैट we know, they inherently know that education is something that is a tool for the people coming from the marginalized communities to get back up and enter into these elite society, to break into that society and claim their spaces. And so I personally feel as an educator who has been on the ground, as an educator जो अभी 3 सरकारी स्कूलों में, लो इनकम प्राइवेट स्कूल में पढ़ा चुकी और बच्चों के साथ रह चुकी है, I personally feel कि it's an active effort to not care about education. सरकार के तरफ से एक बहुत ही एक्टिव कोशिश करते हैं कि हम एजुकेशन में जितना कम एफर्ट लगाएंगे या फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि इट विल बिकम अ टूल एंड इट शुड बिकम अ टूल इनएविटेबली. फिर बात आती है जेंडर और कास्ट और क्लास डिस्क्रिमिनेशन की. जब मैं टीचर के दौरान एक पेडागोजी की बात करती हूँ, पेडागोजी यानी हम कैसे पढ़ाते हैं कंटेंट को या फिर हम कंटेंट को कैसे डिलीवर करते हैं. There is one question that always stays in my mind, and that is, I feel like every educator should ask that question as well. Is your pedagogy biased? Is your pedagogy fundamentalist? Is your pedagogy prejudiced? And unfortunately, हमारे सारे इन सवालों का सारा जवाब हमारे इस कंट्री के सिचुएशन के हिसाब से yes है. Our pedagogy is very fundamentalist, it's very prejudiced, it's very biased. अभी रीम जी ने एक एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने याद दिलाया हमको जो मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ चल रहा है कर्नाटका में. मुझे सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी देने वाला बात ये था कि उनके क्लासमेट्स जो है ऐसे कैसे एक दिन में उनके दुश्मन बन गए, राइट? आई वाज वंडरिंग कि हाउ डिड दे टर्न फ्रॉम laughing with each other, eating with each other, to suddenly wearing saffron shawls and getting out on the roads and rioting, right? अब मैं जब अपने क्लासरूम में पढ़ाती हूँ, मैं अपना क्लासरूम कल्चर ऑब्जर्व करने लगी कि मेरे आने से पहले तक कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मेरे जाने के बाद भी यहाँ पे क्या चलेगा. So this prejudice is so ingrained that 10-year-old students of mine will have ingrained prejudice. You will be surprised because I remember we spoke about community. There was a chapter on in social science called community. तो वो चैप्टर लेते वक्त बात किसी तरह मैंने रिलीजन पे लाया कि देयर आर रिलीजियस कम्युनिटीज एंड वी स्पोक अबाउट हिंदू कम्युनिटीज, मुस्लिम कम्युनिटीज, क्रिश्चियन कम्युनिटीज एंड एवरीथिंग. एंड अचानक से मेरी एक स्टूडेंट उठ के बोलती है कि मैम हमको मुस्लिम टीचर्स नहीं चाहिए. तो मैंने कहा कि ऐसा क्यों है, व्हाई डोंट यू वांट मुस्लिम टीचर्स? तो वो हमारे दुश्मन है मैम. और मैंने कहा किसने बोला? वो हम टीवी पे देखते हैं, मम्मी पापा ने भी बोला कि हमारे दुश्मन है, वो हमको मारना चाहते हैं, वो हमारे घर में घुस के हमें मारना चाहते हैं. एंड ऑल ऑफ दिस 10-year-old was saying without realizing कि आई एम नॉट अ हिंदू और स्कूल में एक और टीचर है जो मुस्लिम है जो उनको हिंदी सिखाती है, ठीक है? तो it is so ingrained, I don't think they realize what they're saying. So I try to understand where this sort of learning is coming from. क्योंकि 10 साल के बच्चे, इनको किसने सिखाया कि हमको इस रिलीजन को हेट करना चाहिए? इतना खुल के कैसे बता सकते हैं, है ना? तो उन्होंने एग्जाम्पल्स देना शुरू किया कि हमारी कन्नड़ा टीचर है, वो हमको एक स्टोरी सिखा रही थी, तो उस वक्त उन्होंने कुछ बोल दिया. या फिर क्लास में एक मुस्लिम बच्चा है, उसको अगर डांटना होता है तो पाकिस्तानी बुला के डांटते.
बच्चे ऐसे ही करते, मेरे सामने हुआ ये, which has shocked me. Like I have a Muslim student, so whenever I cold call the Muslim student, जब भी मैं कुछ सवाल पूछने के लिए उसको मैं बुलाती हूँ कि जाफर उठ जाओ, everyone, there's a collective of Pakistani, अरे Pakistani, this has happened in my class, which makes me feel like हमने सबसे ज्यादा हमको जहां फोकस करना चाहिए था ना एजुकेशन में, हमने डेलिबरेटली वहां पे फोकस नहीं किया, क्योंकि हमको ये हेट्रेड चाहिए. We want to cultivate this hatred in education in order to make sure that the regime that we are facing today stands. It is their only tool. And Bell Hooks का एक बहुत बढ़िया quote है, I might be paraphrasing it. उन्होंने कहा कि classroom remains the most radical space in the academy. And वो मैं मानती हूँ, क्योंकि होता यह है कि क्रांति तो क्लासरूम में से शुरू होनी चाहिए, मुझे तो यही लगता है. All your revolution or your kranti should start from our classrooms, and unfortunately that's not even the last place we look at. फिर बात आती है हमारे कास्ट क्लास की. ठीक है, मुझे टीच फॉर इंडिया से, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ, एंड आई ब्रॉट इट अप विद माय मैनेजर आल्सो कि we have access to an overwhelmingly large number of बहुजन students. फिर भी हमने हमारे जो एजुकेटर्स है, जो हम जैसे फेलोज है, वी आर ओवरवेलमिंगली सवर्णा. कोई कास्ट सेंसिटाइजेशन का वर्कशॉप हुआ नहीं. We keep having those redundant same workshops about how what is working, what is not working, what's going on, same thing. But we have access. And what makes me sad is that we as fellows, when we get into these classrooms where these people have not seen the outside world, we are a window for them to the outside world. हम बार बार रैडिकल पॉलिटिक्स की बातें करते हैं. मैं बताती हूँ मेरे बच्चों का रैडिकल कहाँ से शुरू होता है. हम एक दिन क्लास के बाहर बैठ रहे थे, एंड a student came and asked me, are you married? So I was like, I'm not, मैं शादी नहीं हुई. तो उन्होंने पूछा कि उम्र क्या है आपकी. मैंने कहा मैं 30 साल की हूँ. तो शादी क्यों नहीं हुई, शादी कब होगी? मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी, अभी तो नहीं करनी, कभी करना होगा तो देख लेंगे. And there was a collective gasp in the young girls. They're like, what do you mean शादी नहीं करनी? मुझे कहा क्यों, मतलब करना नहीं है तो नहीं करनी है, नहीं करना है. तो उन्होंने बोला मैम शादी तो करनी पड़ेगी ना, वही तो हमारे पेरेंट्स तो वही बोलते हैं कि 10वीं के बाद शादी करा देंगे. एंड आई टोल्ड देम शादी ऐसे करने की जरूरत नहीं है. आप 10वीं के बाद आगे पढ़ सकते हो, 11th 12th कर सकते हो, कॉलेज जा सकते हो, मेरे जैसे टीचर बन सकते हो अगर आपको टीचर बनना पसंद है, बिकॉज सम ऑफ देम एक्सप्रेस्ड कि उनको टीचर बनना है. दैट आइडिया कि you can say no to something as rigid as a marriage was so radical to them. The idea that menstruation can be discussed in a classroom was so radical to them. All the girls came out of the classroom where one of my fellows was teaching about menstruation. They came running to them like, ma'am, देखो मैम हमें क्या पढ़ा रही है, menstruation पढ़ा रही है मैम लड़कों के सामने. It was so radical to them. And the thing is, what makes me sad is that I'm here for a 2-year fellowship. I will go. They are still stuck with the government teachers or the teachers who are there, who will keep teaching them the kind of things that we're not supposed to teach. Right? And इसका अगर solution अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं यही कहूंगी कि हमको बैठ के we have to put a stand together and claim our space, claim कि हमारा pedagogy एकदम 180 डिग्री चेंज होना चाहिए अंदर से पूरी तरह से. कास्ट हो, क्लास हो. अभी आई रिमेम्बर सरगम स्टार्टेड ऑफ द इंट्रो with the girls versus boys ratio in classrooms. Interesting thing about that is also कि मेरे क्लास में है girls are more than boys, okay, if you're looking at like a smaller example. But the fact also remains, जब 10th हो जाएगा या फिर maximum 12th हो जाएगा, the boys will be the only ones, if they have the money or the privilege to continue in the education, boys will be the only one who will be continuing. And overwhelmingly large number of my girl students will be dropping out. या तो उनको जैसे वो बोल रहे थे, हमको एजुकेशन में तो है, स्कूल में है बच्चियां, लेकिन एजुकेशन इस हद तक कंटिन्यू नहीं कर पाती कि उनका सोशल मोबिलिटी बढ़ रहा है. 10th में ड्रॉप करना पड़ता है या फिर 11th 12th में ड्रॉप करना पड़ता है. they become daily wage laborers or wage workers. They don't get to a point where they can actually break into spaces and gain certain momentum of social mobility. वो नहीं हो पाता.
वो लड़कों के लिए भी हमारे इसमें सेम ही है, लेकिन जेंडर का एस्पेक्ट भी आ जाता है कि इफ यू पुट मार्जिनलाइज्ड बहुजन बॉय एंड अ मार्जिनलाइज्ड बहुजन गर्ल टुगेदर, when it comes to actually finishing the education, the boy always gains momentum and the girl has to drop out. So these are the issues I'm seeing, and दिल पे पत्थर रख के मुझे कहना पड़ता है कि मेरे जो भी स्टूडेंट्स को मैं आज सिखाती हूँ, मेरे बच्चे जो है, उनमें से कई ज्यादा बच्चे मुझे पता है कि 10th के बाद नहीं कर पाएंगे। एंड द रीजन इज माँ बाप के पास पैसा नहीं है। ओके पैसा होगा तो भी एक के लिए होगा, तो अगर एक बेटा है और एक बेटी है तो वो बेटा को चूज करेंगे। ऐसा बहुत है, इन लोगों ने, ये बच्चियां मुझे बोलती है कि घर पे ये सब डिस्कशंस होती है, राइट। फिर बात आती है रिसोर्सेज की। अब वी ऑलवेज टॉक अबाउट हाउ मेस्ड अप एजुकेशन सिस्टम इज, कि सिर्फ एकेडमिक में फोकस है, सिर्फ करिकुलम में फोकस है, बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज भी होना चाहिए। दीज आर ऑल लिबरल फैंसी आइडियाज ऑफ एजुकेशन। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी यही होता है कि वी ग्लॉस ओवर, हम बहुत शानदार आइडिया दिखाते हैं एजुकेशन का, हम बोलते हैं कि हम इतना प्रोग्रेसिव है, हमको पढ़ाई से ज्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज में, ये वो आर्ट्स, इसमें फोकस करना चाहिए। अगेन प्रिविलेज्ड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि असली स्ट्रगल इस बात से हमारे यहाँ शुरू होता है कि क्लासरूम में बैठने के लिए बेंच नहीं है, राइट। मेरे क्लासरूम में जहां मैं अभी पढ़ा रही हूँ फैन नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी ढंग का नहीं है। जो मैं पहले स्कूल में पढ़ाती थी वहां पे बेंचेस और डेस्क कुछ भी नहीं थे, बच्चे नीचे बैठते थे और मुझे खड़े रह के सिखाना पड़ता था। सो फॉर 5 to 6 hours in a day, the little kids will have to look like this, look at me like that. It's physically uncomfortable. It's not a comfortable position to be learning anything, right? उनको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, और मैं समझती हूँ बहुत टाइम तो मैं पढ़ाना भी छोड़ देती क्योंकि उनका मन नहीं कर रहा, विच आई टोटली अंडरस्टैंड। क्लासरूम में बेंचेस नहीं है, स्कूल में पानी नहीं है, स्कूल में ढंग का वॉशरूम नहीं है, क्लासरूम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। These are all major problems. And every time it really, मुझे इतना गुस्सा आता है जब मैं एजुकेशन का डिस्कशन मेन स्ट्रीम न्यूज में देखती हूँ कि हम हमेशा कोई और ही स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करते हैं, जबकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए कि हमारे देश में इतने सारे स्कूल है जहाँ पे बच्चों को बैठने के लिए बेंच नहीं है, which is very, very sad. And I'm talking about 2 out of 3 schools that I've taught. I can't even imagine how many more schools are there. I'm also talking about schools in urban Bangalore. I can't even imagine how bad it is in rural India, the most rural parts of India. Right? So the discussion surrounding education itself is so skewed. Our starting point is wrong. The way the things that we're talking about is wrong. We are entirely misled in this entire discussion. So that's one thing. Another thing I would abhi NEP ki baat ho rahi thi, and it just Reem mentioned NEP, and it really brought some things back that I was thinking when NEP first came. And what NEP does is use sophisticated language to basically tell you that we stand for holistic education. They also claim to universalize access. कि यूनिवर्सलाइज एक्सेस का मतलब ये है कि सारे बच्चों को हर चीज मिलेगा, राइट। एजुकेशन रिसोर्सेज जो भी है सब इक्वली मिलेगा, लेकिन ये सब करने के चक्कर में दे आर डूइंग द एग्जैक्ट ऑपोजिट। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज आल्सो दे प्रपोज्ड कि 8th स्टैंडर्ड तक लोकल लैंग्वेज में सिखाइएगा बच्चों को। अब बात ये है कि 8th स्टैंडर्ड तक जो लोकल लैंग्वेज में सिखाने को आप बोल रहे हैं वो प्राइवेट एलीट स्कूल्स में तो नहीं होगा। प्राइवेट एलीट स्कूल्स में बच्चे विल स्टिल बी लर्निंग इन इंग्लिश. And here I'm not trying to say that English is better than another language, but English is a tool to break into spaces here. तो हमारे बच्चे अगर 8th स्टैंडर्ड तक, मेरे केस में भी होता है, my students who are in 8th 9th grade, their reading levels in English are so low. Their reading levels in English is so low that it's sad. They can't even write their name properly. इतना खराब situation है वहां पे. And NEP coming here and be like, oh, we want to promote culture or language, apne regional language mein sikhao, Sanskrit lao, right? When you do all of that, you pretend to care about culture, but you're basically setting these very students from the margins of the society 100 steps back. Because as much as we would like to say that no language is better than the other, English still, this colonial language still remains to be this one tool that helps people to break into spaces and claim a space in the first place. So that is there.
वन इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे हमेशा खटकी एनईपी के बारे में, एनईपी को बनाने में, स्क्रिप्ट करने में काफी टाइम लगा. आई थिंक इट टुक 4-5 years, but it got rushed and passed immediately right when the school was shut down, when everything was in a standstill, when it was the most vulnerable moment for kids like ours. ठीक है? सॉरी रिया, सॉरी, कुड यू उदिता के पे भी हमें जाना है, तो आप थोड़ा जल्दी अगर हाँ, sorry, कर सकें. yeah, I'll wrap it up. So, pedagogy, resources in our classrooms, a lot of things. My basic point, अगर मुझे summarize करना होगा तो मैं बोलूंगी कि जो हमारे education के बारे में discussions होते हैं, उनका starting point ही बहुत गलत है. हमको स्टार्ट करना चाहिए इस पॉइंट से कि हमारे बच्चों के पास बेसिक चीजें नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, बेंच नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. उसके बाद जब हम पेडागोजी की बात करते हैं, हेट्रेड की बात करते हैं, प्रेजुडिसेस की बात करते हैं, we all act surprised when something really big happens, when something really traumatic happens in the society. सब चीजों का शुरुआत होता है क्लासरूम से. And I can say that with full confidence as an educator who has been in the classroom for 2 years. Every prejudice, every bias that we see in the society starts from that young age, believe it or not, as young as 8-9 years old. And feminist future की बात हो रही थी, मैं उसको उससे conclude करूंगी. If I had to imagine a feminist future for my children or for education itself, resources सब basic चीजें को cover करने के बाद, I would like, एक यूटोपियन ड्रीम होगा, बोल सकते हैं आप, I would like education to be a joyful, radical tool in the hands of young minds, which nurtures sense of empathy and community in them, which will help them to break the shackles and dismantle the shackles of oppression. That is the dream that I have as an educator. And हमारे बच्चों को नहीं भूलना चाहिए यार, हमारे बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा, right? So that should be a lot of our energy should go into looking after our children and how we raise them, because right now none of the energy is going into that. So yeah, it was lovely being part of this. It was lovely letting this all out and having people listen to you. So I'm not going to take much of anyone's time. Thank you so much. Thank you so much, Riya. I'll just quickly summarize what Riya has shared with us in English. Riya spoke about her experience as a teacher for Teach for India, where she works with low-income private schools or with government schools, sorry. And she spoke to us about how children are ingrained into majoritarian sense from a very young age, which we are also seeing with what is happening in Karnataka today. She's also spoken about the massive gap between what the institutional mechanisms imagine education would be and what the demands and needs of the education sector in India today are, to the extent that benches might be missing and NEP might be talking about extracurricular activities. And she imagines that she hopes that as for a feminist future, education is much more of a substantive presence in the lives of young children, rather than something that simply is a matter of statistics for the government, which is very interesting. And this is where, like, you know, यहाँ से हम जो पिछला युवा संवाद हुआ था उसके बारे में भी सोच सकते हैं कि क्यों पर्सनलिस्ट पॉलिटिकल फेमिनिस्ट मूवमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये जो माइक्रो लेवल पे बहुत सारे चेंजेस होती हैं, उसको आप तभी समझ सकते हैं जब आप उसको उस तरीके का अटेंशन दें, क्योंकि ऊपर से बात करना तो बहुत इजी होता है. जो एनईपी आया भी है उसमें जो जो उसका फोकस लगता है, वो फोकस यही लगता है कि वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इंडिया विल बिकम the hub of educational facilities in the future, etc., smart classroom, etc. But the crux of the जो बात वहीं की वहीं रहती है कि जो एक्सेस की बातें हैं, जो न्यूट्रिशन की बातें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हैं, वो टस से मस नहीं हो पाती हैं. तो और वहां तक जाने के लिए एक्चुअली आपको बिल्कुल ही एक माइक्रो लेवल पे, नॉट अ बर्ड्स आई व्यू लेवल पे, आपको ये सारी चीजें पे अटेंशन पे करना होता है.
And I will try to speak more about it in the question answer round and in the concluding remarks. But for now, I would like to invite Udita to उदिता हमारे साथ अपनी बात रखें. उदिता PhD स्कॉलर हैं JNU में, और उदिता एक्टिविस्ट भी हैं. वो JNU में जो एक छात्र संगठन है कलेक्टिव, उसके साथ जुड़ी हुई हैं, और वो संग्रामी घरेलू कामगार यूनियन से भी जुड़ी हुई हैं. और उदिता दी और हमने JNU में साथ में मूवमेंट में भी पार्ट लिया है. तो उदिता दी, आप प्लीज शेयर व्हाट यू वांटेड विद अस. हाँ, हेलो, सुनाई दे रहा है क्या? हाँ, सबको लाल सलाम. मैं बेसिकली एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में बात करना था, लेकिन क्योंकि पिछला 2 स्पीकर ऑलरेडी एजुकेशन पे हम लोगों को बहुत सारा इंसाइट दे चुके हैं, तो मैं थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगी एम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट पे. बेसिकली क्योंकि मैं जुड़ी हुई हूँ घरेलू कामगार यूनियन के साथ, तो मैं बेसिकली उनका महिलाओं का अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो असंगठित क्षेत्र है, उनके वहां पर महिलाओं का क्या स्थिति है जो काम करने आते हैं, तो उसको थोड़ा एम्फसाइज करना चाहूंगी. अगर आप मतलब कोविड का पहले वाला सिनेरियो एंड बाद वाला सिनेरियो ऑल्दो बहुत अलग है, लेकिन अगर आप शुरू करती हो कोविड के पहले वाला सिनेरियो जो 2004-05 में जो NSSO डेटा आया था, अगर आप उसको देखेंगे तो बहुत ज्यादा फीमेल पार्टिसिपेशन ऑफ इन लेबर फोर्स हमको दिखने को मिला था. तो बेसिकली उसमें फिर बहुत लोग मतलब पूरा देश बहुत खुश हो गया था कि हम महिलाएं बहुत सारा वर्कफोर्स में एंगेज कर रही है. लेकिन उसके बाद जब 1-2 साल बाद जब और थोड़ा डेटा रिवील हुआ और थोड़ा हम लोगों को देखने को समझने को मिला, तो हमको देखने को आया कि बेसिकली वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट किस जगह पे हो रहा है. बेसिकली पहले जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे था, वो अब ट्रांसफर होके वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जा रहा है. वो MSME में ज्यादा लोगों का योगदान हो रहा है, महिलाओं का. वो एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटी कर रहे हैं, खुद से जो लोन वोन लेके खुद चला रहे हैं, वैसे एक्टिविटीज में ज्यादा उनका पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है. एंड मोर ऑफ की अगर मतलब महिलाएं अगर हायर एजुकेशन में जा रही है, जो सरगम भी बात कर रही थी, हायर एजुकेशन में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाद क्या वो सही में उनको एक डिग्निफाइड, एक अच्छा काम जिसको बोलते हैं, जिसमें हमको सारी सुविधाएं जो मिलना चाहिए, चाहे वो PF का हो, चाहे वो ESI का हो, चाहे ऐसा मैटरनिटी लीव का हो, ऐसे कुछ भी सुविधाएं हमको मतलब मिल नहीं रहा है, क्योंकि हम लोगों को ऐसा कोई डिग्निफाइड काम मिल ही नहीं रहा है. हम लोग जनरली अभी तक सबसे ज्यादा महिलाओं का एम्प्लॉयमेंट में एंगेजमेंट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर हो, या फिर गारमेंट में कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हो, कंस्ट्रक्शन हो, या फिर मनरेगा जो है उस पे हो. तो अगर मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँ डोमेस्टिक वर्कर का बहुत बातचीत हो चुका है, बहुत एकेडमिया में तो ऑब्वियसली हुआ है, अलग अलग टाइम में हुआ है, कोविड के टाइम में, क्योंकि मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन रहा है कोविड के दौरान ये डोमेस्टिक वर्कर्स. क्योंकि जो एक बड़े शहरों में, बेसिकली दिल्ली जैसे अर्बन सिटीज में, जो RWA एंड सोसाइटी में जो रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन एंड जो लोकल लोगों का जो नेक्सस होता है, उनको तोड़कर महिलाओं का कोविड में अपना काम मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था. उनको सोसाइटी में घुसने नहीं दिया था, उनका आई कार्ड एंड क्रिमिनलाइजेशन प्रोसेस तो उनको पहले से चल रहा था. लेकिन कोविड में जो हुआ, उनको एकदम ही ये अचानक से पूरा हवा चला कि सारा कोविड मानो डोमेस्टिक वर्कर का काम करने आने से ही हो जाएगा. तो उनको कोविड चले जाने के बाद भी अगर वो काम पे बुलाए तो ऑब्वियसली उनको लिफ्ट यूज नहीं करने दिया, उनको वॉशरूम यूज नहीं करने दिया. मैं ऐसे बहुत सारे वर्कर्स को जानती हूँ बेसिकली जो
कभी मतलब 7-8 घंटा अलग अलग घर में काम करता है, लेकिन वो कभी वॉशरूम नहीं यूज कर पाते हैं। उनको यूज करना होता भी है तो उनको घर आना पड़ता है, या फिर अलग जो बहुत बड़े बड़े सोसाइटी में जो सर्वेंट्स टॉयलेट होता है उनमें उनको मतलब शायद कभी कभी जाने का परमिशन मिलता है। तो ऐसे जो गेटेड सोसाइटी है इनमें काम करना इनका मजबूरी है, लेकिन उस मजबूरी को क्यों कैसे सोसाइटी के लोग या फिर जो अर्बन का जो ये मिडिल क्लास जनता या फिर जो भी मिडिल क्लास क्यों सारे क्लास के जनता जैसे इसको एक्सप्लॉइट किए, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। क्योंकि असंगठित क्षेत्र या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कभी कोई भी काम का आपको रिकॉग्निशन तो है ही नहीं, एंड ऊपर से उसका कोई आई वुड लाइक टू से कि उसका कोई क्या बोलते हैं मतलब परमानेंसी तो छोड़ दीजिए, मतलब इम्पोर्टेंस है लोगों की जिंदगी में, लेकिन उसको कोई इम्पोर्टेंट तरीके से देख के उसको कुछ उसके लिए कुछ करने का नजरिया अभी तक हमारे ना स्टेट के पास है ना लोगों के अंदर हम इसको ले जा सके। तो बेसिकली स्टेट जो नहीं किया, जो गवर्नमेंट पूरे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जो खुद को चलाने का जिम्मेदारी स्टेट ने दे दिया कि हम ऑर्गेनाइज्ड काम को खत्म किए, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट को खत्म करके एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ही प्रमोट किया गया, इकोनॉमी को प्रमोट करके जो प्रमोट करने का जो तरीका रहा है वो सही में उसमें सारे लोग इफेक्टेड हुआ है, लेकिन महिलाओं के लिए स्पेशली महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है। क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक वर्कर का ही बात करो ना, उनको मेटर्निटी लीव का छुट्टी मिलता है, ना उनको मिनिमम वेज तो कभी मिलता ही नहीं है, और मैक्सिमम स्टेट में शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट की लिस्ट में नहीं आता है। 5 या 6 स्टेट में मिनिमम शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के लिस्ट में आता है। इसके वजह से वो स्टेट पॉलिसी में हम लोग कुछ चेंज नहीं कर पाते हैं। मिनिमम वेज 5-6 स्टेट में है एक, और जैसे राजस्थान में मिनिमम वेज है 5,600 समथिंग। दैट इज टू लो कि वो कोई अपना जिंदगी 5,000 रुपए में चला ही नहीं सकता। लेकिन ये एक नेशनल लेवल एजेंडा कभी बना ही नहीं पा रहे हैं। स्टेट उसको इतना रिप्रेसिव तरीके से देख रहा है कि यूनियन बनाने का प्रोसीड्यूर इतना प्रॉब्लमेटिक, इतना मुश्किल हो जा रहा है आज के दिन में कि हम इसको नेशनल लेवल एजेंडा तो बना पा रहे हैं, लेकिन नेशनल लेवल पॉलिसी लेवल पे नेशनली कुछ मूव नहीं कर पा रहे। इसकी वजह से ना स्टेट पॉलिसी में हम इसको इंक्लूड कर पा रहे हैं। तो जब तक ये हम मतलब ये नहीं कर पाएंगे तब तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में महिलाओं का स्थिति इतना बुरी तरीके से चलता रहेगा। चाहे आप कंस्ट्रक्शन देख लो, उसमें भी महिलाओं का जो वेज गैप होता है वो भी काफी प्रॉब्लमेटिक है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं, गारमेंट इंडस्ट्री में भी महिलाओं को जो काम मिलता है कंट्रेक्चुअल मतलब दिहाड़ी में ही मिलता है जनरली, कोई तो ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल में भी नहीं मिलता है, सारा ही डेली वेज वर्कर है। उसमें भी महिलाओं को जो वेज गैप होता है जनरली मेल की तुलना में वो काफी खराब है, बहुत ही कम पेमेंट मिलता है। तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है। एंड वन मोर थिंग कि हम अगर आज के दिन का डेटा देखिए, आफ्टर कोविड जो एनएसएसओ को उठा देने के बाद जो ये पीरियोडिक लेबर सर्वे का डेटा देखे, ऑल्दो 2021 में का जो डेटा रफ डेटा आया है उसमें दिखा रहा है कि महिलाओं का एंगेजमेंट बढ़ा है, लेकिन फिर से वही चीज कि किस में बढ़ा है, ऑब्वियसली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बढ़ा है। एंड ये बढ़ेगा क्योंकि कोई परमानेंट या परमानेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कम होता जा रहा है। महिलाएं मजबूर है कि उनको ऐसे जगह पे काम करने के लिए मिल रहा है जिसके मतलब जिसमें काम करने के बावजूद भी उनको कोई फायदा हो नहीं रहा है, लेकिन उनको दिन मतलब अपना रोजी रोटी चलाने के लिए उनको जगह पे काम करना पड़ रहा है। एंड वन मोर थिंग ये है कि हम अगर ये देखते जाए कि बेसिकली जो ये इन रीम और
रिया का जो चीज को मैं कंटिन्यू अगर करूँ कि लोगों का महिला छोड़ दे रहे हैं क्लास 10 के बाद। आप अगर देखें डेटा भी तो मतलब 12 से 16 साल, या फिर अगर आप ग्राउंड में भी काम करते हो तो हम लोग को देखने को मिलता है 12 से 16 साल की उम्र में महिलाएं, लड़कियां जो है उनके स्कूल ड्रॉप आउट रेट ह्यूज है। ये क्यों है? क्योंकि बेसिकली उनको आइदर कोविड के बाद तो ये हुआ कि इनकम कम हो गया, इनकम कम होने का पूरा जो इफेक्ट होता है वो घर की लड़कियों पे ही होता है। आइदर उनका पढ़ाई छोड़ दिया या उनको खाना कम खाने को मिल रहा है, उनका न्यूट्रिशन कम जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो एक सेक्शन, एक मोर इम्पोर्टेंट फैक्टर है, दैट इज केयर वर्क। केयर वर्क का जो पूरा बर्डन है वो पूरा ही महिलाओं पे है। जो मम्मी काम पे जाती है, मम्मी पापा, तो कौन संभालेगा छोटा भाई बहन को? या घर में अगर अभी सुनाई दे रहा है क्या? अभी सुनाई दे रहा है? हेलो, हाँ। तो अगर घर में कौन काम करेगा तो ऑब्वियसली वो जो घर की लड़की है उसी पे वो बर्डन आ जाता है। एंड वी एज अ कलेक्टिव वी डिडंट रिकॉग्नाइज द डबल केयर बर्डन जो महिलाओं पे सालों से थोपा जा रहा है सोसाइटी द्वारा। एंड स्टेट भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। स्टेट रिकॉग्नाइज करता है कभी कभी, एंड करके क्या करता है कि कोई स्कीम में हम कुछ वेज देने का बात करते हैं, लेकिन उससे तो जो ये डबल बर्डन ऑफ वर्क का जो प्रॉब्लम है ये रिड्यूस नहीं होता है। तो बेसिकली हम लोगों को अब ये स्टेट एजेंडा बनाना चाहिए एक्चुअली कि सोशलाइजेशन ऑफ केयर वर्क हम कैसे करें, कैसे हम क्रेश बनाएं, मतलब या फिर कम्युनिटी किचन, ऐसे जो एजेंडा पहले हम काफी सालों पहले हम उठाते थे, आज के दिन में वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो फेमिनिस्ट फ्यूचर के हिसाब से अगर मैं एक डिमांड सोचती हूँ कि हमको ये एक कलेक्टिव डिमांड के तौर पर रखना चाहिए कि हमको ये जो केयर वर्क का जो बर्डन है ये महिलाओं से कैसे लेके सिर्फ महिलाओं के ऊपर ये कैसे ना रहे, ये पूरे होल सोसाइटी इसको कैसे, स्टेट इसको कैसे उठाए, कैसे ले, इसके लिए कैसे मतलब क्रेश बनाए, कम्युनिटी किचन बनाए, अलग अलग तरीका अपनाए जिससे ये केयर वर्क का बर्डन महिलाओं से शिफ्ट हो पाए। एंड वन लास्ट थिंग इज कि जो लीगल चीज में ज्यादा नहीं जाऊंगी, लेकिन ऑब्वियसली जो स्टेट एजेंडा को मैं जो थोड़ा देर पहले भी बोली, स्टेट एजेंडा में ये भी हम लोगों को डिमांड को बहुत तरीके से आगे ले जाना है कि जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के महिलाओं का जो काम है उसको हमको मान्यता देना पड़ेगा। स्पेशली डोमेस्टिक वर्कर का जो मांग है, मतलब जो काम है उसको मान्यता देना पड़ेगा। इनसे अभी तक इसको वर्कर्स के तौर पे देखता ही नहीं है, लेकिन इसको हम लोगों को वर्कर्स के तौर पे देखना चाहिए। इनको हम लोगों को डोमेस्टिक वर्क को ऐसे शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में लिस्ट में लाना चाहिए एज ए नेशनल लेवल पे। एंड उसको लेके हम लोगों को ऑब्वियसली एक पॉलिसी बनाना चाहिए कि हम मिनिमम वेज जो 5,000 से नहीं होगा, ऑब्वियसली 5,000 से किसी का घर नहीं चलता है, तो डेफिनेटली एक डिग्निफाइड मिनिमम वेज, एक डिग्निफाइड काम हम कैसे महिलाओं को दे, इसके बारे में हम लोग को ये एजेंडा बनाना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को पुश करने के लिए कि हम इसको कैसे एक डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट दे, ताकि हायर एजुकेशन करने के बाद भी जो महिलाओं को काम मतलब देखो जो महिलाओं का काम छूट रहा है उनके लिए तो नहीं मिल रहा है, लेकिन जो महिलाएं हायर एजुकेशन में जा भी रहे हैं उनके लिए भी कोई ऐसा डिग्निफाइड काम है नहीं आज के दिन में। तो हमको ये एक एजेंडा को ऑब्वियसली उठा के पुश भी करना पड़ेगा पूरे समाज में कि हम एक डिग्निफाइड काम दे महिलाओं को, जिसमें मैटरनिटी लीव हो, जिसमें 4 छुट्टी हो, और बेसिकली मिनिमम वेज तो एटलीस्ट ले, पीएफ हो, ईएसआई हो, ऐसे जो भी सिर्फ सोशल स्कीम तक गवर्नमेंट जा रही है क्योंकि उनका इलेक्टोरल बेनिफिट होगा, लेकिन सोशल स्कीम दे देने से महिलाओं का स्थिति में कुछ बदल नहीं आएगा। उनको एक डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा। एंड
लास्ट जो मैं बात करके खत्म करूंगी, ऑब्वियसली मैं भी मतलब हम लोग काफी दिन में अलग अलग जगह पे हिजाब बैन को लेके प्रोटेस्ट में भाग रह चुके हैं, एंड ऑब्वियसली उसको तो मतलब obviously I am giving my solidarity to those marginalized section, and जो इसमें बहुत उभर के आया है वो एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि हिजाब बैन या कोई भी अटेयर्ड बैन का पूरा चीज किसको मिल रहा है कि महिलाएं जो है स्कूल में पढ़ ही नहीं पाएंगी, क्योंकि पर्टिकुलर स्थिति ऐसा पैदा करने का कोशिश हो रहा है स्टेट द्वारा भी कि महिलाएं उसमें मतलब महिलाएं एजुकेशन में पार्टिसिपेट ना कर पाए। ये काफी खराब हालत ही हो रहा है ना। महिलाओं के पास एजुकेशन एक मतलब शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा जगह दे पा रहे हैं जिसमें हम महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, ना हम उनके लिए एक डिग्निफाइड एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पा रहे हैं। तो हम मतलब स्टेट एज ए पूरा फेलियर हो रहा है पूरा वुमेन एम्प्लॉयमेंट एंड वुमेन एजुकेशन के सेक्टर में। ये बोल के ही मैं अपना बात खत्म करना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच उदिता दी। तो जैसे मैं सुन रही थी उदिता दी को, मुझे मेरे दिमाग में जो ख्याल आ रहा था, मेरा अपना काम सेक्सुअल वायलेंस पे है। तो जो जैसे मैं उदिता दी को सुन रही थी, मेरे दिमाग में आ रहा था कि एक जो वर्क प्लेस का इमेजिनेशन होता है वो कैसा होना चाहिए इंडिया में, बिकॉज एज वी नो द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, एंड फेमिनिस्ट राइटर्स जैसे बोलती हैं, जो उदिता दी ने भी बोला अभी हमें बताया कि विमेन्स लेबर सब्सिडाइजेस द इकोनॉमी। मतलब जो इकोनॉमी आज एक जो भी मतलब इतना बोस्ट करने की बात होती है वो एक्चुअली है क्योंकि सो मच ऑफ विमेन्स वर्क इज अनपेड, इज इनविजिबलाइज्ड और नॉट इवन रिगार्डेड एज वर्क। एज उदिता दी ने बोला कि डोमेस्टिक वर्कर एंड केयर वर्क, जो मेजॉरिटी विमेन काम करती हैं जिस सेक्टर्स में, उसको वर्क माना ही नहीं जाता है। टू दी एक्सटेंट कि कुछ साल पहले जब एनएसएसओ हुआ था तो हाउसवाइव्स और सेक्स वर्कर्स को अनप्रोडक्टिव कैटेगरी में एक साथ रखा गया था। This has been a contention for the feminist movement for many decades now. And Udita di जैसा बोल रही हैं कि इसको this has to be elevated to the level of a state agenda, कि आप कि domestic work और substantive education जो आज के हमारे तीनों स्पीकर्स ने हमें बताया है, ये एक नेशनल पॉलिसी की तरह उभरना चाहिए फेमिनिस्ट मूवमेंट की तरफ से। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें उसमें मतलब जो भी जैसे जो भी सेफगार्ड्स मिलते हैं प्राइवेट वर्क प्लेस में, एक जैसे सेक्सुअल वायलेंस का है, यूनिवर्सिटीज में जीएस कैश हुआ करता था जिसको भी गवर्नमेंट ने डिसमेंटल करके अब आईसीसी ले आया, विच इज अ कम्प्लीटली पपेट इंस्टीट्यूशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिग्निफाइड कैसे बनाया जाए औरतों का काम और कैसे प्रोडक्टिव बनाया जाए उनका काम, ताकि काम वो सिर्फ not just for wages but also for their own selves. How can we make that possible? So these are some of the questions that have emerged abhi tak. And thank you to all three of our speakers for speaking so evocatively and precisely about today's topic. So now we could take questions. एंड मैं जिस ऑर्डर में क्वेश्चंस आए हैं पहले मैं उनसे पूछ लेती हूँ, फिर शायद मैं बाद में पूछूं। तो एक क्वेश्चन आया था रिया के लिए। पहले मैं रिया का ये जो क्वेश्चन आया था वो पूछ लेती हूँ। मीरा, देन आई विल कम टू योर क्वेश्चन। So for Riya, the question is, you spoke powerfully about your work with students. Tell us more about your conversations and work with the teachers, the government teachers who are your colleagues as well. Riya, can you hear me? Hi, I can hear Hi. you. Yes. Okay. Should I read the question again? Yes, please. I lost you towards the end. Okay, sorry. You spoke powerfully about your work with the students.
Tell us more about your conversations and work with the teachers, the government teachers who are your colleagues as well, since that is also an opportunity to think of changing pedagogy. Yeah, that is the saddest part. Unfortunately, there is zero conversation with them because two reasons mainly. The main reason being that sorry, since Riya, sorry, can I just translate Udita what Udita di said to English and then I'll come to your question. I'm really sorry. हाँ जी जरूर yeah. What Udita di said was, so she spoke about her work. She works with domestic workers and other construction workers who are in the unorganized sector of the economy. She spoke about how during the pandemic there was they were the most vulnerable because suddenly they had become criminalized and called as spreaders of infection. They were not allowed to enter colonies, etc. And because of this, many of them lost their jobs. Not just jobs, they were treated in an extremely indignified manner. And they have no option but to work in these gated colonies, gated campuses or colonies, etc., where the behavior towards them by all classes is extremely prejudiced. Many times it can happen that they're unable to use the washroom at many for the whole day because they're not allowed to use the washroom in the house, or there is a separate servants washroom or servants area where they can use these amenities. And the other most important thing that Uttaradi said, which was about care work, which is about the double burden that falls on women because of being the default care workers inside and outside the house, inside the household. And how one of the things that is needed is the socialization of care work, the creation of creches, the creation of community workers, so that some of this burden can be lessened for women. And these were the kind of questions that used to be raised earlier, but now the situation is even more precarious and there's a greater need to raise these demands again. And she also said that the unorganized sector needs to be given the due diligence, the due importance that it's always taken away from them. And these two things together, higher education and dignified work together, needs to be taken up as a state agenda, made into a national policy in order to bring about effective change in the lives of women in these sectors. So that's what Udita Di's talk was about, and I hope I have done justice to it. And sorry, Riya, again we can go back to your answer. Sorry, I can repeat it. अगर मैं एक बार हिंदी में भी सवाल बोल सकती हूँ. हाँ हाँ, तो रिया के लिए सवाल आया है कि रिया ने बहुत अच्छे से बताया अपने काम के बारे में और बहुत पावरफुली अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के बारे में बताया. लेकिन सवाल है कि जो उनके साथी टीचर्स हैं, जो कॉलीग्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हैं, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि वो भी एक जगह है जहाँ पे हम पढ़ाने के तौर तरीकों में बदलाव लाने की कोशिश कर सकते हैं. तो रिया. हाँ जी, उनके साथ एक्सपीरियंस अनफॉर्चुनेटली बहुत खराब रहा है. उसमें मेन रीजन ये है कि जब मैं टीच फॉर इंडिया की तरफ से काम करती हूँ, टीच फॉर इंडिया में भी और स्कूल में भी हायरार्की जो होता है, इसमें सबसे नीचे आते हैं हम फेलोज, क्योंकि स्कूल हमें इस नजरिए से देखता है कि हमारे पास तो परमानेंट टीचर्स है, तुम लोगों को कोलैबोरेट करना था, वी आर नॉट पेइंग यू, यू वांट टू कम एंड टेक द लोड ऑफ द अदर टीचर्स, तुमको मेन सब्जेक्ट सिखाना है, सिखा दो. इट्स लाइक दैट. द फेलोज एंड अप टीचिंग ऑल द मेन सब्जेक्ट्स, स्कूल टीचर सिर्फ लैंग्वेज सिखाते हैं. ठीक है, तो इसमें जब भी बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे बाकी टीचर्स का पढ़ाने का तरीका या फिर क्लासरूम बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगता, बच्चे आके उनसे कंप्लेन भी करते हैं, मेरे सामने भी होता है. अगर बेसिक एग्जाम्पल देना हो तो बच्चों को मारना TFI पॉलिसी के भी अगेंस्ट है, हमारा पर्सनल मॉरल पॉलिसी के भी अगेंस्ट है, लेकिन schools में it is so rampant, the punitive environment that schools sort of afford, it's so rampant कि बच्चों को बहुत बेरहम से कभी कभी पीटा जाता है हमारे सामने भी. और हमने बहुत बार कंप्लेन भी किया कि ऐसा मत करो, लेकिन इसमें होता क्या है ना, एटीट्यूड
इसमें स्कूल का एटीट्यूड ये होता है कि यू आर नॉट, हम तुमको नहीं दे रहे पैसे यहाँ पे रुकने के लिए, तुमको जाना है तो जाओ, दिस इज हाउ वी वर्क, हम सालों से ऐसे ही काम करते हैं, बच्चों को सजा हम ऐसे ही देंगे, हम मारेंगे तो ही मानेंगे, तुम बच्चों को नहीं मारती। दे हैव एक्चुअली गॉन, ये उनका कंप्लेंट रहा है, स्कूल वालों ने हम फेलोज के खिलाफ कंप्लेंट किया है कि हम बच्चों को नहीं मारते, क्योंकि हम बच्चों को नहीं मारते, बच्चे हमारे साथ काफी फ्रेंडली है, क्लास में काफी बातें करते हैं, मजे करते हैं, वो उनको अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है उनकी आंखों में ये डिसरेस्पेक्ट है। मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, मैं क्लास में ये दुपट्टा पहन के एक दिन ऐसे क्लास दे रही थी एंड आई वाज टीचिंग, तो एक टीचर आई, मैंने देखा भी नहीं उस टीचर को आते हुए, आई वाज टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स, टीचर आई, क्लास में घुसी, मेरे सामने जो बच्चा बैठा था उसको थप्पड़ मार एकदम से। मैं आई वॉज इन शॉक, मुझे भी लगा कि अचानक से हुआ क्या, बिकॉज मैं बातें कर रही हूँ, टीचर आती है थप्पड़ मारती है। मैंने पूछा क्या हुआ, ये क्या था, एंड शी वाज लाइक तुम्हारा दुपट्टा जो है इसका ये जो एंड है वो बच्चा खेल रहा था उसको पकड़ के। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुमको क्या दिक्कत है? हाँ, that is so disrespectful, one to the kid and to me as a teacher also. You are entering my class and you're beating the kids up. So the effort to put in with the teachers is very less here, and I personally feel like that is majorly because I have no authority, which is very sad. तो अगर आप मुझसे सोल्यूशन मांगेंगे तो मेरा ये एम है कि आगे जाके जब मैं एजुकेशन सेक्टर में ही रहना चाहती हूँ, आगे जाके मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ जहाँ पे वन पेडागोजी में या फिर क्लासरूम कल्चर, स्कूल कल्चर में मेरा कोई एक्चुअल अथॉरिटी हो, ताकि मैं कुछ डिसीजंस ले पाऊँ। वो एक। दूसरा ये है कि हम बच्चों का जब थ्राइविंग कल्चर हम बोलते हैं कि बच्चों के लिए ये सही है, ये सही है, उनका वेलबींग ये हमको उसके लिए ये करना चाहिए, we forget to think about teachers for them to feel motivated, हमको क्या करना चाहिए। मेरे स्कूल में जो प्राइवेट टीचर्स अभी पढ़ा रहे, their salaries are very very less, like shamefully less। एक महीने में 8,000 10,000 में वो पढ़ाती है, तो उनका मेंटल अप्रोच टुवर्ड्स दिस एंटायर प्रोफेशन, उनके आंखों में ये बहुत गिरा हुआ है कि हमको तो इतना ही मिल रहा है, हम इतना ही काम डालेंगे। So there is no enthusiasm and passion towards children and education. There is only sense of, oh, I'm looking at it as a work, which I get it. This is a capitalist world and you need work to sort of earn money, which I get it. Lekin NEP maybe, or in general maybe, we don't have enough things in place to make sure teachers have a environment where they can thrive and where they have a sense of community, ki there will be an exchange of healthy ideas and there is like a space to put in constructive feedback. बहुत हायरार्किकल हो गया एजुकेशनल स्पेस में भी। मैं अभी जिस पोजीशन में उस पोजीशन में, लेकिन ना मैं स्कूल के खिलाफ कुछ बोल पाऊंगी ना किसी और के खिलाफ। It would be totally different thing if I was a permanent employee of the school, in which case I can put my foot down, but obviously I'll have to risk my job also there. So it's like a whole situation. I feel like I'm still, like I said, मैं सिर्फ 2 साल हुए हैं मुझे इस प्रोफेशन में आए हुए। I'm still in the phase where I'm identifying problems first of all, and hopefully eventually I'm able to come up with something. And ये जो टीचर्स के साथ मिलके पेडागोजी चेंज करने का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज हम बच्चों के लिए अगर कुछ भी करना हो तो वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। हम कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, हम कैसा क्लासरूम कल्चर मेंटेन करना चाहते हैं। बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्लास में आके कुछ और पढ़ाती हूँ, कुछ और ही कल्चर होता है हमारे क्लास में, और दूसरे क्लास टीचर्स के सामने एक बहुत डर का माहौल होता है। So it's confusing for the students also. They also don't know how to behave in a classroom, because they're allowed to behave in a certain way in mine, but they're not allowed to do that in other teachers, which is like a major problem for their psyche also. They don't know. It's their growing years and it confuses them ki what is appropriate behavior. So I hope I could answer that. Thank you, Riya. I'll let you know if there are any follow-up questions. Udita दी, एक सवाल आपके लिए आया है। Can you hear me? बीच में रुक गया था। हाँ, तो मैं पहले इंग्लिश में बोलती हूँ सवाल, फिर मैं हिंदी में बोलूंगी। Continuing the point about distributing care labor burden so that it does not fall only on women. You've been part of different collective and movement spaces. What would you say about care labor within these collective and movement spaces? And what is your feminist future dream in that question? तो सवाल है कि आपने केयर लेबर के बर्डन के बारे में बात की और कैसे जरूरत है कि ये सारा बर्डन औरतों पे सिर्फ ना पड़े। आप खुद एक मूवमेंट के स्पेस में रहे हैं,
और वहाँ पे एक जो कलेक्टिव एक जो पॉलिटिकल कलेक्टिव होता है और मूवमेंट का जगह होता है, वहाँ पे केयर लेबर कैसे किस पे गिरता है, कैसे मैनेज होता है, और इस मायने में आप कैसा फेमिनिस्ट फ्यूचर सोचते हैं? सॉरी, बीच में रोक गया, मेरा शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी खराब है. कैन यू जस्ट continue the last part? हाँ, you've been part of different collective and movement spaces. What would you say about care labor within these collective and movement spaces, and what is your feminist future dream in that context? So basically पहला का उत्तर मैं तो ऑलरेडी अपने बात रखते समय दे चुकी हूँ कि केयर वर्क का बर्डन शिफ्ट करने के लिए हम लोगों को एक मूवमेंट तो मतलब कैसे स्टेट एजेंडा बनाना चाहिए सोशलाइजेशन ऑफ केयर वर्क को. एंड डेफिनेटली उसके लिए अलग अलग मूवमेंट में ही अलग अलग तरीके से लोगों को नॉट ओनली इकोनॉमिक टर्म्स में बट ऑल्सो लोगों का पॉलिटिसाइजेशन इज इम्पोर्टेंट. महिलाएं ये रियलाइज करे, क्योंकि एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी. जब मैं 8 मार्च को पिछले साल एक जगह मीटिंग कर रही थी और मैंने बोला कि ये तो वर्किंग वुमेन डे है, तो बेसिकली हम याद करेंगे जो महिलाएं, मतलब महिलाओं का काम के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे. तो मैंने पूछा कि आप लोग को, तो लोगों बोला हमारे यहाँ कोई काम नहीं करता. तो मैं बोली कोई काम नहीं करते आप लोग? बोला नहीं, इधर कोई काम नहीं करता. मैं बोली घर में भी नहीं काम करते? तो बोला हाँ, घर में तो बहुत काम करते हैं ये वो. मैं बोली तो फिर वो काम नहीं होता? आप लोग थकते नहीं हो? पैसा नहीं मिलता है, यही बात है कि हम लोग घर में जो काम करते हैं दैट इज अनपेड लेबर, लेकिन काम तो हम सब लोग करते हैं. तो महिलाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, कोई भी महिलाओं के लिए, कि ये रिकॉग्नाइज करे कि वो वर्क करते हैं. वो खुद को वर्कर मानते ही नहीं है, वो खुद को, क्योंकि उनका लेबर ही अनपेड जाता है, अनरिकॉग्नाइज्ड है उनके लिए भी और समाज में भी. तो कभी ये कोशिश हम लोगों को लगातार करना चाहिए, कैसे मतलब पॉलिटिसाइजेशन उनका करते रहना चाहिए कि कैसे उनको भी ये समझ में आए कि हम काम करते हैं, चाहे वो कोई मान्यता नहीं दे रहा है. हमें यही मांग उठाना चाहिए कि कैसे हम अपने काम को मान्यता दे, कैसे उस काम को हम लोगों के पास ले जाए, कैसे बताए कि वो भी काम है. लेकिन पहले तो हम लोगों को, महिलाओं को ही ये रिकॉग्नाइज करना जरूरी है. तो एक तो स्टेट एजेंडा, जो स्टेट के पास हम लोगों का डिमांड तो रहेगा ही सोशलाइजेशन ऑफ केयर वर्क को लेकर, जो क्रेश वगैरह बना के जो बर्डन शिफ्ट करने का प्रोसीड्योर, उसको लेके तो हम लोगों को मांग एंड मूवमेंट करना ही चाहिए. लेकिन उसके साथ साथ पॉलिटिसाइज भी करना चाहिए, नॉट ओनली ऑन इकोनॉमिक टर्म्स बट ऑल्सो महिलाओं भी अपना स्थिति को कैसे ज्यादा अच्छे से समझे. एंड सेकेंड पार्ट के लिए भी मतलब फेमिनिस्ट फ्यूचर, मतलब यही उत्तर मैं दोबारा रिपीट करूंगी इसमें कि मूवमेंट में केयर वर्क, मूवमेंटल स्पेस में केयर वर्क को लेकर भी मतलब यही चीज है कि लोगों को थोड़ा समझ में आए, महिलाओं को, कि उनके ऊपर सिर्फ वो दूसरों के घर में जब काम करते हैं वो काम नहीं होता है, अपने घर का काम भी काम होता है. तो मुझे लगता है उनके साथ अगर हम लगातार बातचीत करें, लगातार उनको कुछ कुछ ऐसे लिटरेसी प्रोग्राम ऑनलाइन पॉलिटिसाइजेशन करते रहे, तो उनको भी हम समझ पाएंगे. तो ये काम आसान होगा, ये मूवमेंट बनाना, एक मूवमेंट करना उनको, उनके साथ. जैसे अभी आंगनवाड़ी का जो वर्कर्स थे, उनका जो ये पूरा आशा आंगनवाड़ी का वर्कर्स का जो मूवमेंट रहा है, वो पहले भी बहुत सालों से मूवमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी मेन एजेंडा ही था कि उनको गवर्नमेंट कभी उनके काम को काम ही नहीं मानते, इसलिए उनको कभी वेज या सैलरी नहीं देते, उनको ऑनररी ही देते हैं. एंड दैट इज नॉट गोइंग टू, मतलब दैट शुडंट बी हैपन कि एक काम आप 10 12 14 घंटा आप काम कर रहे हो और आपको सिर्फ ऑनररी पे किया जा रहा है, क्योंकि आप कभी महिलाओं के काम को काम ही नहीं मानते हो. केयर वर्क तो ये इनहेरेंट है, ये महिलाएं जन्म से सीख के आई है, तो इसको हमको तोड़ना पड़ेगा. बोलना चाहती हूँ बस. Thank you, Udita.
ये एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चंस उसी ऑर्डर में पूछूंगी जिसमें वो आए हैं। तो चैट बॉक्स में मीरा का क्वेश्चन है। मीरा, would you want to read it yourself or should I read it? मीरा, Can you read it? I am just trying to scroll up, हाँ and if हाँ it's हाँ, before you, okay, maybe it's easier. हाँ हाँ हाँ, I'll read it. हाँ. So Mira's question is to all panelists. Her question is, while we engage with specific questions of education and unemployment, what do you all think must be some concrete action agendas for the feminist movement in the age of advanced capitalism and fascism? तो रिया, उदिता, रीम, एनी ऑफ यू, आप में से कोई भी ये सवाल अगर आंसर करना चाहे तो। सॉरी संग्राम, मतलब मैं एकदम ही बहुत ही एपोलॉजी बोल रही हूँ, मेरे इधर नेटवर्क बहुत खराब है और मैं क्वेश्चन भी नहीं देख पा रहा। एक बार और हिंदी में तुम अगर क्वेश्चन बताओगे। सॉरी, नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम। तो मीरा का क्वेश्चन है कि अभी तक हमने जो एक स्पेसिफिक एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में बात की है, लेकिन कॉन्क्रीटली अगर कोई क्या एक एक्शन एजेंडा क्या होना चाहिए फेमिनिस्ट मूवमेंट के लिए, अभी जब एडवांस कैपिटलिज्म और फाशिज्म के का दौर है, तो उसमें फेमिनिस्ट मूवमेंट का इंटरवेंशन कहाँ पे होना चाहिए, ये सवाल है। इसमें मतलब ज्यादा तो बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन डेफिनेटली मतलब ये बहुत ही एक अहम सवाल है, लेकिन इसको मतलब ज्यादा कॉन्क्रीट तरीके से शायद बोल नहीं पाऊंगी। थोड़ा जो बोलने का कोशिश करूंगी दैट इज कि अभी मतलब कैपिटलिज्म फैसिज्म के दौर में अब सारे मूवमेंट का ही जो हाल हुआ है उसको मतलब देख के बस किसान मूवमेंट छोड़ के कोई भी मूवमेंट तो टिक नहीं पा रहा है, चाहे वो CANRC हो जो एकदम ही वुमेन लेड मूवमेंट था, लेकिन जिसको जिस तरीके से उसको दबाया गया अभी, तो एक डेफिनेटली ये जरूरी है आज के दिन में, जो जैसे जितना स्टेट डिप्रेशन बढ़ रहा है, कि हम कंटिन्यूअस स्ट्रगल को बना के रखे एंड फेमिनिस्ट एजेंडा जो भी होगा, अगर हम मतलब क्योंकि एजुकेशन एंड वुमेन है, ओवरऑल भी बोलना चाहूंगी तो नॉट ओनली जो महिलाएं जो काम करते हैं या ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो काम नहीं करते, उनके अंदर भी हम पॉलिटिसाइजेशन प्रोसेस को कैसे बरकरार रहे एंड उनके लिए भी एक सेफ एनवायरनमेंट एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। नॉट ओनली फॉर इस स्टेट डिप्रेशन के दौर में कोई भी मूवमेंट हम कैसे जिंदा रख पाए, वो एक इम्पोर्टेंट एजेंडा है हम लोगों के लिए। उसके लिए हम लोगों को ऑब्वियसली चाहिए मतलब पॉलिटिसाइजेशन हम कंटिन्यूअस प्रोसेस में हम महिलाओं का करते रहे, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट मतलब चाहे वो एम्प्लॉयड हो चाहे वो अनएम्प्लॉयड हो, अनएम्प्लॉयड इन द सेंस ऑफ अनपेड हो, तो एक यही है। और बाकी उतना एजेंडा के टर्म में आई डोंट थिंक कि मैं उतना अच्छे से बोल पाऊंगी क्या एजेंडा रखना चाहिए। सभी यहाँ नॉट ओनली बस रीम, रिया और मैं, बाकी आप लोग भी थोड़ा इसमें इनपुट दे तो बेटर होगा। अगर कोई और बोलना चाहे तो। Hello. रीम, या रीम। So I think it is important to make the community itself aware of their rights and how to fight the legal battles with regarding rights and with regarding how to deal with certain issues. Like, you know, if somebody asks, somebody told me that no, you can't avail this right, you have no like, you know, there is no possibility to get this thing done for you. See, for example, somebody told me that you are illiterate, so how can I issue an ATM card, or you are see, how can you know, you can, how can you get your checkbook when you are illiterate? So
the person who was with me then, so he said that, Hare, this person is doing her PhD, how can you call her illiterate and all? Then I said, no, this is not the way how we fight the battle, because it is there on the public domain itself that by the RBI circular itself that we can have these things. We can have all the right to avail all these facilities. So that kind of an understanding should be there. One should know what all rights one have, and one should know how to fight the legal battle. So as I told earlier also, it was the disabled people who fought for their right to read, particularly those who are impaired and dyslexic, those who cannot access to the print. So it was the disabled people who who carried out the legal battle, saying that we have all the right to read, so we should have the right to record the books in whatever format which is accessible to us. So likewise, today, if we have noticed, so this in Netflix, 90% of the content of the Netflix is audio supportive, which means in their content where there is no dialogue. So if something is happening on the screen, if some visual is going on the screen, this that text would be converted into audio, into voice, and it would be, if you put that voice on and keep your headphones, then you can hear a person speaking to you what is happening on screen. So that is definitely a revolutionary turning point in our experience of watching something, right? Like when you don't have access to some visual, so somebody is there to explain it to you, so you don't need somebody's support or help to watch a video, so a film. So this is how, like, if you fight for your rights, so after a point, people identify and people understand that, okay, these people have the people with these kinds of challenges are also existing in this world, so this should be made available for them also. So that kind of a thought is there internationally, so that understanding needs to be provided among the people in the community. So that is what one thing that we need to do. We need to do. Another thing is, like, sensitizing. So today also, when I was using this metro, I was KMRL, I was standing outside the lift with the assistant. So the lift was there. So this person who was there with me, this lady told me that let's wait for the lift to come, the other lift to come up. In the sense, this lift is already full, so let it go down and then come up, then we'll wait. So then I thought, most of the time I do that, but then I thought, this is not fair on a disabled person. Why should a disabled person wait when a lot of people, when others are using the lift, because it is made to use for the disabled people and for the old people. So I said, in my case it's okay, but what if somebody with a lift, with a wheelchair is waiting over here without knowing the fact that actually a person on a wheelchair was waiting there to catch the lift, and this person couldn't get enter because the lift was full and the people inside, they were not letting him to enter the lift. So then I intruded. So this lady told me about this. Then I intruded and I told those people, like, that they should let the wheelchair to go. But nobody said anything. In fact, nothing happened. The lift went down. So then this lady was also not responding anything. She was on her uniform and she had all the identity card showed up. So she could actually raise her voice and she has all the authority to command, but she did not do. And I said, this is not fair. Like, nobody will listen to my voice. There is no point in me voicing against this, but you have all the right to voice against this, but you didn't do. Then again the lift came up, again there was rush, but then at that point this lady
intruded and she let the wheelchair go in. So when everybody was there inside the lift, to make everyone aware of this, I said, there is no compromise if there is a disabled person, particularly if there is someone with a wheelchair, someone on a wheelchair, then we should let that person go. We shouldn't make that person wait. So then she said, Madam, many times we told them, we tried to tell them, but then these people do not like this. So then I said, but uh, for making the public aware of the fact that they should give some space to the disabled person, if you actually making that remark, making it that remark, then you are not going to get any call from the station controller's office. Nobody is going to call you up and scold you. But if any one of us go and complain about the same, then definitely we are actually being denied of our right. So then somebody is going to call you. So, and she did not say anything. So this is the condition, and I felt really bad for this person, and also for those who actually those who did not give a space to that person. I was just thinking about what could be the mental condition of those people. It is so pathetic. uh, you don't feel anything bad about this, that you are not giving space to somebody who is comparatively not capable of capable as you are. So that kind of issue exists over here. So some kind of a sensitizing need to be done, and also by rules, these things should be Alert, implemented. Sheila Rajwar has joined the meeting. Alert, tech support has stopped screen share. Leaving menus. Menu. Zoom meeting. Thank you, Reem, and thank you, Udita, for your responses. There is, I think these are the questions that we have till now. Have I missed? I think there's one more question. Sorry. This is We a have question actually two more questions, Sargam. Okay. Yeah, I found it. Sorry. This is all to all the panelists. So I'll read out the question and then I'll translate it to Hindi. The question is, all educational institutions have also strengthened surveillance over the last 2 years, especially with online teaching. I have a lot of teaching friends who have said that the principal or other members of the management drop in to check upon the classes. Could this also be ways to monitor and control free thinking and debate? I can go. Yeah, please, Riya. I'm going to keep a video off for a second because I think it's interfering with my network. I'm going to connect the answer for this with the answer to the previous question you gave to all the panelists, which is what is the concrete action, right? A concrete action, like I said, I don't have a full idea about what it can be, but I know what lies at the core of that concrete action that I am thinking of. That would be to disrupt the idea of education as a commercial product or a luxurious product that only some people have access to. It should be more of a tool that we should be able to access, right? So the only way to disrupt that idea would be to come together and form communities and make education possible in that communities where you are constantly rejecting the linear idea of education, career, pesa, right? So I don't know how to do it, but I know that will lie at the core of whatever concrete action I might come up with in the future as an educator. Coming to this question about surveillance, the reason I'm talking about rejection of education as this commercial product is because the surveillance is so prevalent. It's because they know. It's because they know that education is the tool with which you freely think, you critically think about people, you critically think about things around you. आप लोगों के बारे में सोचते हैं, आप अपने बारे में सोचते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप ये सोचते हैं कि 2 साल पहले या फिर 10-100 साल पहले ये हमारे देश में क्यों हुआ, इस तरह का दंगा क्यों हुआ, इस तरह की लड़ाई क्यों हुई, हम अब क्या कर सकते हैं वो लड़ाई ना रिपीट हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं. That should be the core of education. But state and the state machineries and everyone who are sort of like players in this,
दे नो कि अगर एजुकेशन, अगर ऐसा स्पेस बन गया जहाँ फ्री थिंकिंग अलाउड है, तो जो भी सिस्टम की हम आज बात कर रहे थे, ओप्रेसिव सिस्टम, सेक्सिज्म हो या कास्टिज्म हो, जो ब्राह्मणिज्म हो, जो भी हो, वो सारा का सारा सिस्टम जो है वो डिसमेंटल हो जाएगा देखते ही देखते। दे नो दैट। उसको अपहोल्ड करने के लिए हम उनको ये इंश्योर करना जरूरी है कि हम चेक रखते रहे हम कि बच्चे क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे एक सीनियर थे टीएफआई में, वो हिस्ट्री का एक चैप्टर है इस्लाम करती, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, वो चैप्टर है, ऐसा भी नहीं कि वो बाहर का कुछ पढ़ा रहे थे। तो वो हिस्ट्री पढ़ा रहे थे कि बच्चों ने जाके घर पे बातें की होगी कि आज हमारे क्लास में सर ने ये पढ़ाया, हमने इस्लाम के बारे में पढ़ा, क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ा। वो बच्चे के पेरेंट्स स्कूल में आए और पूछने लगे ये सब हमारे बच्चों को क्यों सिखा रहे हो, so there is a sense of surveillance, not just headmasters coming in and checking in. It's very it's way more वो hidden than that. इतना भी explicit नहीं है कि वो मेरे क्लास में आके देखते रहेंगे कि बच्चे क्या बोल रहे हैं, क्या डिस्कशन चल रहा है। उससे कहीं ज्यादा हिडन है, छुपा हुआ है। वो बच्चों से पूछते हैं यहाँ वहाँ कि आज क्लास में क्या सीखा, पेरेंट्स के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, या फिर यहाँ वहाँ उनको पता चल जाता है। देयर आर अदर वेज कि उनको पता चले कि क्लासरूम में क्या चल रहा है। तो द आंसर इज यस, डेफिनेटली, दैट इज टू एंश्योर कि क्लासरूम में ऐसी कोई डिस्कशन ना हो। अभी मैं बताती हूँ, अगर मेरे एचएम को ना, हेडमास्टर को पता चला कि मैंने क्लास में कर्नाटका में जो हिजाब रो अभी चल रहा है उसके बारे में बातें की, अगर उनको पता चला कि आई सॉर्ट ऑफ encourage the discussion around religious harmony and whatnot, and I made them question things कि अगर तुम बोल रहे हो कि यूनिफॉर्म पहनना चाहिए तो तुम्हारे हाथों में वो तुम्हारे टेम्पल से आया हुआ धागा क्यों है। So all of these questions I threw at them, but it was with fear. It was with a lot of fear कि एक टीचर होने के नाते मैं ये जो टॉपिक्स अभी क्लास में ले रही हूँ, I am one slip up, one student going home and talking to their parents openly away from actually getting sacked or actually facing the consequences. So it's really hard. That is why it's very important to actually come up with new communities with people who think alike or who sort of have the same sort of dream when it comes to education, and form communities that actively disrupts this idea. Otherwise, when you're stuck in the system, there's very little that you can do in order to तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, but all of those become like band-aid ideas. But yeah, surveillance is a big problem, and it's not explicit, it's very hidden, it's very cunning. The policing is very, very ingrained, and it affects how students start thinking before even they know that they're capable of thinking from a very, very young age. So yeah. Thank you, Riya, for your answer. This is a question for Reem. Reem, can you hear me? Reem, am I audible to you? Okay, maybe we can come back to this question for Reem later. But just to keep the conversation going forward and so that we can move to our concluding remarks also, as I was... Hello. Hi, Reem. Hi. Yeah, I can hear you. Tell me. There's a question for you. Apart from advocacy with state governments, example, the 2022 Kerala budget, for budget allocation, what do you think are the demands we should be making to restructure NEP, since rolling back the policy is no longer is a longer process, so that we make education equitable? तो रीम के लिए जो सवाल आया है वो यही है कि जो मतलब एक पॉलिसी लेवल पर अगर हम सोचे तो एनईपी को कैसे हम बदलाव लाने का सजेशन दे सकते हैं, क्योंकि अब रोल बैक करना तो काफी लंबा प्रोसेस है और अभी पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन एनईपी में कैसे रीस्ट्रक्चरिंग पॉसिबल है अभी भी?
So, Reem, would you like to answer? Yeah, so over here Tech in support a Kerala, screen actually share, the leaving government menus, has already initiated an inclusion cells in higher education institutions. So inclusion in the inclusion cells, we would be discussing about various the disabled people or people from the marginalized communities. They'll gather together and each community would be discussing their own issues and problems, and they would try to sort a solution. They would try to seek a solution. They would try to get an answer for their questions within the institutional level itself. And if there's anything that the government could intervene and help out, the government is open to that. So that kind of initiations are happening over here to start various inclusive cells on campuses. So that's one thing. And as far as possible, how much ever it's possible, it is also important to revamp certain evaluation system, and maybe if not completely, maybe to a certain extent, to particular communities, particularly intellectually challenged group. So that kind of suggestions are being given. Now it is it is really important to see how far it's going to be implemented. So these are the several small steps that are taken or initiated or suggested by the disabled people from various communities. Thank you, Reem. Stop screen share, leaving menus. थैंक यू रीम। रीम का जवाब इस सवाल के लिए ये था कि जो छोटी छोटी चीजें जो डिसेबल कम्युनिटी के थ्रू की जा रही हैं वो है कि ये सजेस्ट करना कि एजुकेशन पॉलिसी को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए के हिसाब से थोड़ा उस हिसाब से बनाया जाए तो बेटर होगा। और तो यही कुछ कुछ छोटी छोटी जो पॉलिसी लेवल पे चेंजेस सजेस्ट कर रहे डिसेबल्ड कम्युनिटी एनईपी के लिए, तो वो अभी वही पॉसिबल है। और कोई सवाल है? मुझसे छूट गए हो तो अगर सब ऑडियंस के सवाल हो गए हो तो मैं एक सवाल पूछूंगी फॉर ऑल आवर पैनलिस्ट्स रिमार्क्स। सो जो जो चीज सबके कॉन्वर्सेशन से आ रही है वो ये है कि एजुकेशन हो या एम्प्लॉयमेंट हो, उसका एक सब्सटेंटिव जो इफेक्ट होता है उसमें चेंज लाने की जरूरत है। जो रिसेंट इयर्स में सिचुएशन और भी जो कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, जैसे लेबर रेगुलेशंस को डाइल्यूट किया गया है, एनईपी का इंट्रोडक्शन हुआ है, एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन हुआ है, ये जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं इससे सिचुएशन और भी थोड़ी ग्रेव हो गई है। और एंड एज वी नो कि एक मूवमेंट खड़ा करना, जैसे उदिता ने भी बोला कि आज बहुत मुश्किल हो गया है। तो इन दैट सेंस, इन thinking about the future, what do you suggest, what do you think, at what register or at what level can we organize right now, because the situation is extremely precarious? So at what register are changes still possible, and what avenues do you think would be most productive in a long term sense, be it the question of women in the workforce or women in education? तो वो क्या कैसे आर्टिकुलेट की जाए ये चीजें, जिससे जो डेंजर है ऐसी गवर्नमेंट का और ऐसी पॉलिसीज का वो लोगों को एक उभर के पता चले थोड़ा। क्योंकि ऐसा मतलब इंडिया में ऐसा बहुत, जैसे जो माइग्रेंट एक्सोडस हुआ उससे भी हमें ये पता चला कि माइग्रेंट्स अपना शहर छोड़ के घर वापस चले गए, and we saw all the visuals that during that time and how difficult that was. लेकिन ये कि मतलब इंडिया में एक हिस्ट्री रहा है लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, बट वो बहुत ही अब कम हो गया है। तो उन माइग्रेंट वर्कर्स में पॉलिटिकल विल कैसे जगाया जाए कि एटलीस्ट वो सोच पाते कि हमें सरकार से सवाल करना चाहिए कि अगर लॉकडाउन लगाया है तो व्हाट अबाउट डेली वेज वर्कर्स, हमारा क्या होगा?
तो ये सवाल भी जो पूछने का एक जो हिम्मत होता है या शक्ति होती है, जगह होता है, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। तो वो जगह बनाने के लिए व्हाट डू यू थिंक वी कैन डू? So yeah, that's my question to all the panelists, and after this maybe we can move to concluding remarks. So कैन आई स्टार्ट? yeah, please. तो बेसिकली मैं एक चीज डिफर करूंगी सरगम से। देखो, सवाल वो पूछने की जगह पे है, मतलब जगह पे नहीं है, लेकिन सवाल पूछना नहीं चाहते ऐसा नहीं है। अगर आप कहीं भी वर्कर्स के अंदर चले जाओ, डर होता है, क्योंकि उनका इतना खराब काम का हालत है कि कब काम आएगा कब नहीं आएगा, दे डोंट नो। तो शायद उनका हिम्मत नहीं होता है। लेकिन किसी से भी बात करोगे, उनको अगर किसी भी गवर्नमेंट का बुराई उनको लगता है कि ये गलत हुआ है तो बोलता है। तो बस हमको उस चीज को ही कंटिन्यूअसली, लेबर यूनियनों का भी जो हम देखते हैं, मैक्सिमम लेबर यूनियन काफी टाइम से बस ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काफी फोकस ही रहा है। ऑर्गेनाइज सेक्टर काफी फोकस रहा है क्योंकि उसमें लॉज है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पास लेबर लॉज भी नहीं था। लेकिन आज के दिन में अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही है जहाँ काम हो रहा है। तो नाउ लेबर यूनियंस भी अपना दायरा का हद तक शिफ्ट किया है सालों से। कुछ पिछले 10 साल से तो एटलीस्ट शिफ्ट किया है कि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी कुछ कुछ फोकस करे। तो अब मैं बार बार यही बोलूंगी कि किसान आंदोलन से हमको ये सीख लेना चाहिए कैसे कंटिन्यूअसली, मतलब डट के, मतलब एक दिन का नहीं, एक पूरा लॉन्ग टर्म एजेंडा के साथ लॉन्ग टर्म पॉलिटिसाइजेशन प्रोसेस कैसे उनके अंदर लिया जाए, ये हमको उस आंदोलन से सीखना है। कुछ आंदोलन का चाहे वो अच्छा हो बुरा हो जो भी रहा है, लेकिन एक सीख तो उसमें से आई है कि ऐसे कंटिन्यूअस स्ट्रगल हमको बिल्ड करना चाहिए। तो ये आज के दिन में एटलीस्ट वर्कर्स के अंदर एंड महिला वर्कर्स के अंदर तो पॉलिटिसाइजेशन प्रोसेस का ऑब्वियसली जरूरत है, सबके अंदर ही जरूरत है। एंड इस कंटिन्यूअस स्ट्रगल, कंटिन्यूअस पॉलिटिसाइजेशन प्रोसेस को मेंटेन करना बहुत आज के दिन का हम लोगों को एक्चुअली एजेंडा बना के उसमें काम करना चाहिए। मतलब आई डोंट नो कि सरगम खुश हुआ इस जवाब से कि नहीं, हाँ बिल्कुल है बिल्कुल। कि नहीं? I mean, मतलब that's the hope. हाँ, मतलब बिल्कुल वर्कर्स सहमति के है। साथ वो होप तो वही रहता है ना कि पॉलिटिकल विल हो लोगों में। हाँ, पॉलिटिकल विल तुमको देखने को मिलेगा क्योंकि उनका हालत इतना है कि उनको और कुछ खोने का है नहीं, तो और क्या ही खो सकते हैं। तो ऑब्वियसली उनको है कि हम आगे जाएंगे, बस उनको हम मतलब लोगों को थोड़ा इकोनॉमिक डिमांड से बाहर उठकर भी जो मतलब सवाल करने का, नॉट ओनली इन इकोनॉमिक टर्म्स, उनको बस सवाल करना है कि ये स्टेट का पॉलिसी अंडरस्टैंड करने के भी वो जगह में हो। इसके लिए भी तो उनको एक अपने इकोनॉमिक डिमांड से उठ के उनको स्टेट का पॉलिसी का मिनिमम अंडरस्टैंडिंग तक उनको जाना चाहिए। ये हम लोगों को थोड़ा पुश करके लगातार तरीके से यूनियनों को करना चाहिए। मैं हाँ जी, मैं ऐड करना चाहूंगी। तो एक सेकंड। हाँ, जस्ट लाइक शी सेड, मैं उसमें थोड़ा ऐड करना चाहूंगी। ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, क्योंकि मेरे सिचुएशन में भी व्हेन यू लुक एट एजुकेशन एंड स्टूडेंट्स इन स्पेसिफिक, जब पैंडेमिक हुआ था और अचानक से सब कुछ बंद हो गया और एकदम से ऑनलाइन होने लगा, वो पेरेंट्स के पास ये बोलने के लिए स्पेस नहीं था कि रुक जाओ, एजुकेशन कंटिन्यू करना, हम क्या करें, हमारे बच्चों का क्या होगा। वो स्पेस ही नहीं था, क्योंकि तुम अगर उनके सामने सर्वाइवल और फाइटिंग अगेंस्ट फैशिज्म का अगर ऑप्शन रखोगे तो सर्वाइवल चूज करना पड़ जाता है। जब तक कुछ खोने को है तब तक लोग थोड़ा डर डर के रहते हैं। तो ऐसा नहीं है उनको पता नहीं है, उनको पता है। बहुत सारे पेरेंट्स मुझे आके बोल दे कि 8 महीने का एजुकेशन छूट के अब क्या करें। अभी आगे कुछ हर बार, अभी सेकेंड वेव भी हो गया, हर बार ऐसा कुछ लॉकडाउन होता है तो सबसे पहले उनको सिटी छोड़ के जाना पड़ता है, बच्चों का एजुकेशन टूट जाता है। उनको पता है, दे ऑल्सो नो हाउ टू आर्टिकुलेट
उनको गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है, वो बोलते भी है कि हमसे हो पाता तो हम बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल देते, अच्छे प्राइवेट स्कूल में डाल देते जहाँ पे अच्छा फैसिलिटी है, अच्छी टीचर्स है, वो सब हो जाता। तो ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, दे आर वेरी पॉलिटिकल, दे माइट नॉट नो द मोस्ट वर्क वर्ड्स टू आर्टिकुलेट, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसा है, हम इस कैपिटलिस्ट सिस्टम में इतना मतलब हम सब कुछ इतना रिस्ट्रिक्ट हो गया है कि क्रांति करने के लिए भी तुमको पहले ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारे प्लेट में खाना आएगा कि, है ना। जब तक तुमको वो नहीं पता कि हम क्रांति भी कैसे करें, अनलेस देयर इज नथिंग टू लूज, तब तो मतलब बात वहां तक पहुंच जाती है तो बहुत सैड है, लेकिन तब तो यू आर ऑलवेज इन द फाइट और लूज इन द काइंड ऑफ मोड। जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट में भी हुआ था, उनके पास कुछ खोने को था नहीं, बात उतनी ऐसा नहीं है कि फार्मर्स क्राइसिस अचानक से एक दिन में इतना बड़ा है, बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन बात यहाँ तक आ गई कि अब तो उनके लिए यही था कि अब तो कुछ खोने के लिए नहीं है, अब तो लड़ेंगे। So they know, and I'm always a very staunch believer of mutual aid, community aid. हमको एक्चुअली साथ में आना पड़ेगा, ताकि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरी हक की लड़ाई आज लड़नी है, देयर नीड्स टू बी समवन टू मेक श्योर कि आज मेरे प्लेट में खाना आएगा, इफ आई कांट अफोर्ड इट। तो जब तक हमारे अंदर वो सेंस ऑफ कम्युनिटी नहीं बनेगी ना, जब तक हमारे अंदर वो ये टुगेदरनेस का जो जो सॉलिडारिटी का जो स्पिरिट होता है वो अगर अच्छे से स्ट्रांगली नहीं बैठेगा, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जिनको लड़ना होता है उनके पास लड़ने का रिसोर्सेज या टूल्स नहीं है, और जिनके पास प्रिविलेज और रिसोर्सेज है वो करना नहीं चाहते। तो इट्स अ विशियस साइकिल of people having privilege being apolitical and people who want to fight not having the resources to fight. सो लेट्स होप, ये उम्मीद है कि हमारी कम्युनिटीज जो है अभी छोटे छोटे कम्युनिटीज जो ऑनलाइन में बन रहे या फिर ऑफलाइन में बन रहे, आगे जाके वी आर एबल टू मोबिलाइज इन अ वे दैट इट एक्चुअली डिसरप्ट्स अ लॉट ऑफ repressive systems. I hope that answered the question. Yes, thank you, Riya. Reem, would you like to add something? Us that looking towards the future, what are the registers at which we can one can intervene as part of the feminist movement to reignite questions of political will and making demands from the state? So, would you like to answer? Are you there, Reem? Maybe we can come. Yeah. Sorry, what happens is that when I am muted, it will take me some time to unmute. That's why I'm taking some time to respond. Okay, I'm sorry. Yeah, no problem. So, yeah, again, what I feel is that, see, different communities' needs are different. So it is one important thing is that to understand and to recognize and identify, in the sense, or to have some affinities towards each other. And when somebody is raising some problem, it is very important to recognize and understand that, and maybe to react and respond to it in a better way together, as a community together. So that is one thing. And yeah, another thing is, as I've said earlier also, it is very important to know how to fight battles legally. Definitely, I believe that, some ways would be there opened for various marginalized communities to come up, and definitely they are political and they know what their rights are. So they know how to raise their voices. So definitely these communities would come up and raise their voices. And yeah, policy level amendments, how much ever it's possible, that needs to be done. And we need to be continuously, raising these issues and reacting towards it. And maybe, like, we need to remind the administrators that these policy level, these amendments are very important for us, be it curriculum, be it academic, be it non-academics.
Alert. Tech support has stopped screen share. Zoom meeting. Thank you, Reem. That makes a lot of sense. So just on that note, maybe मैं ये कहना चाहूँगी कि thank you all three of you for sharing your experience and your expertise and helping and talking so precisely about the challenges of making education and employment equitable. And उसमें जो ये इतना बड़ा चैलेंज और इतना फोकस वो फेमिनिस्ट मूवमेंट का फॉर डेकेड्स इट्स बिन, और उसमें क्या हम एक फ्यूचर इमेजिन करते हैं वो साथ में आके सोचना बहुत ही जरूरी है, स्पेशली आज के दौर पे जहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आए हैं और बहुत सारी नई मुश्किलें आई हैं। तो इन नई मुश्किलों से कैसे एक नया पॉसिबिलिटी भी इमर्ज करता है, उसके लिए सोचना, बात करना और काम करना, यही तीनों चीजों से वो होता है। तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। और मुझे बस वो बात याद आ रही है, मेरी जॉन, प्रोफेसर मेरी जॉन है, वो उन्होंने काफी साल से उनका पूरा करियर जेंडर इश्यूज पे लिखने में के लिए है। उन्होंने अपने एक रिसेंट आर्टिकल में एक वर्ड टर्म यूज किया था, hermeneutical injustice, which is कि when you are disabled as the knowers of your own experience, मतलब जो आपका अपना जो आप एक्सपीरियंस होता है उसी में आपका जो नॉलेज है उसको इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता है। तो दैट इज व्हाई इट इज सो, जो आज होता भी है समाज में, and that is why it is so important to hear from activists, from educators and from teachers about what is actually happening on ground, because they know precisely what the requirements are. I think Udita Di wants to say something. मेरा का एक सवाल जो मैं अपना बात जब बोली थी उसी के साथ करूंगी, सवाल है कि किसान आंदोलन को जो सॉलिडारिटी मिला वो डोमेस्टिक वर्कर एंड आंगनवाड़ी को क्यों नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि मतलब देखिए, मतलब केयर वर्क इज नॉट ए वर्क, ये या घर का जो भी काम है वो काम नहीं है। इस अनरिकॉग्नाइज्ड चीज को हम जब तक रिकॉग्नाइज ना कर पाए कि काम तो काम होता है, चाहे उनके लिए हमको मतलब जबरदस्ती बिना मन का लोग करे या वुमेनहुड को इतना सेलिब्रेट किया है कि महिलाएं मानी नहीं पाते कि वो काम कर रहे हैं। इस चीज को हम जब तक नहीं बदल पाएंगे तब तक हम लोगों को उतना स्पेस कभी नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को हमारा फॉरमोस्ट एजेंडा होना चाहिए कि वर्क को हम, डोमेस्टिक वर्क हो या कोई भी केयर वर्क हो, जो ये डबल बर्डन ऑफ वर्क हो इसको, या अनपेड लेबर हो, इसको हम वर्क का रिकॉग्निशन देने का कोशिश करें। उसको हम, उसके लिए हम एक मूवमेंट का स्पेस बनाए, उनको हम एक एजेंडा बनाए, मूवमेंटल एजेंडा बनाए, उसको हम स्टेट पॉलिसी में लाए, नेशनल पॉलिसी में लाए, ताकि हम उसको बार्गेन टर्म में ले जा पाए। तो जब तक हम वो रिकॉग्निशन के पोजीशन में आ जाएंगे, आई थिंक तब हम लोगों को भी सॉलिडारिटी मिल ही जाएगा। इतना ही बोलना था। I think वो बहुत ही I think पावरफुल बात है जो उदिता दी बोल रही हैं कि फॉर सो मेनी इयर्स जो घर का काम होता है उसको औरतों का ड्यूटी बना के प्रेजेंट किया जाता है सोसाइटी में। तो ये रियलाइज करवाना कि this is also work, that this contributes not only to the household but to the economy in general, कि इसके बिना जो पूरा एक ढांचा है वही गिर जाएगा। तो ये एक बहुत ही एक डेफिनेट और कॉन्क्रीट पॉइंट उदिता दी ने लाया है सामने। तो with that maybe Abha would like to conclude today's session. हाय, मैं शायद 1 मिनट, हाँ मेरा स्टव ऑन है, जरा ऑफ करती हूँ जी। तो मैं वही से शायद शुरू करके उसी पे शायद मतलब हमारा जो अगले सेशन है उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी।
I'll perhaps begin with the very important question that Meera had raised, and the response that Sargam and Udita told, right? Um, when I read the question that Meera asked, one of the things that I quickly thought was, how was the farmers movement? How did people mobilize? One is the one that Udita and Sargam had told, that जैसे यूनियनाइज कैसे किया कि घर घर जाके बताया, ताकि बच्चों को तक पता था कि मे बी नॉट द इंट्रिकसीज ऑफ व्हाट द थ्री लॉज were, but at the larger idea of what the three laws could do, right? So when men were participating in the movement, women were taking care of farming, and that really changed the way children also saw how chores were happening in the house. And when men and women of the house went and were participating in the protest sites, it were basically the children who took up the entire course inside their home. This is, of course, the way people unionized in their homes. The second is, of course, a lot of resources were there. The entire Sikh community and the diaspora in Canada and America, they mobilized. So it became, in one sense, about an identity also. So that is one, and that reflected in the way people were able to travel from states to state, right? So from Delhi and Punjab, there were delegations where people traveled, say, for example, to Karnataka or Kerala or Tamil Nadu to talk about and held Mahapanchayats. So that movement, I think, added to why this was happening. So just adding to what Udita had mentioned, if for example, if we're talking about Anganwadi workers or laborers in the unorganized sector, if you are able to think of ways in which we can talk about this very thing and expand it, we'll have to sort of think about it and talk about how, for example, how these labor laws affect the economy, right? When people talk about tax, even today within the larger organized sector, say, which is only 6 to 7%, it is just about income tax, right? That is the only idea of tax that people talk about, and the conversation really never is about how everybody contributes to this economy. तो मैं शायद इसको थोड़ा समराइज करती हूँ कि जो एक मूवमेंट रहा है किसान आंदोलन का, कि एक चीज तो ये है कि यूनियनाइज कर पाए हैं लोग, कि घर घर जाके ये जो 3 कानून है इसके बारे में लोगों ने बातचीत की, कि घर के बच्चों को तक पता था कि शायद नुआंसेस, उनके जो छोटी छोटी चीजें हैं लॉ के अंदर, शायद वो समझ नहीं पाए क्योंकि उनकी जो उम्र है वो है। लेकिन जब घर के पुरुष प्रोटेस्ट साइड पे थे, तो महिलाओं ने मतलब जो काम है एग्रीकल्चर का, उन्होंने वो ले लिया। और अगर उस घर के पुरुष और महिला और जितने भी बड़े लोग हैं एज वाइज, अगर वो प्रोटेस्ट साइड पे बैठे थे, तो बच्चों ने घर का काम ले लिया। तो वो एक बात कि घर तक बच्चों तक पहुंच पाई है, वो एक बात है। दूसरी बात कि रिसोर्सेस हैं, कि इसमें रिसोर्सेस इन द सेंस ऑफ मनी, वो बहुत काम किया है। कि कनाडा और अमेरिका में जो सिख समुदाय हैं और जो इंडियन डायस्पोरा है, उन्होंने इसके बारे में लगातार बात की। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स हो या फिर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो मजदूर हैं, उनकी जो चीजें, कि मान लीजिए मनरेगा या फिर जितने भी तमाम अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, यही कि उदिता और सरगम ने जो कहा कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश में, अगर इस बात को हम इवन इन दैट सेंस, अगर लिबरल भाषा में हम लोग अगर बात करना चाहें, कि किसान आंदोलन में ये हुआ कि एक लिबरल लैंग्वेज ये था कि आपके सामने जो खाना आ रहा है वो किसान से आ रहा है। तो एक लिबरल सेंटिमेंट वहां पे शायद वर्क किया है। This liberal sentiment of the food that you eat, it's by the farmers. So this kind of liberal sentimentality perhaps must have worked. The people were able to talk about it. It entered the dining tables and living rooms.
तो ये चीज यहाँ से कनेक्ट करके मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगी कि thank you so much to everybody who joined today's very fruitful and important session, because a lot of questions that were raised that people tried to answer, and for many of us, I guess, we might have to go back into this discussion, maybe rewind and see, are there points that we need to go back and think about again and again, to come back and see what are the feminist futures that we can think of. Yes, absolutely. I was just coming to that. And Sargam, thank you so much. The way you began and you've been connecting dots and placing your very important observations as a sociologist has only added to the conversation. आपकी जो एक नजरिया, सिर्फ नजरिया नहीं है, आपका खुद का एक ऑब्जर्वेशन है, एक सोशियोलॉजिस्ट होने के नाते, एक स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी होने के नाते आपका जो ऑब्जर्वेशन रहा है वो काफी वैल्यूएबल रहा है. So thank you so much for wonderfully moderating this session. And the next session that we have, जो अगले सैटरडे है, वो है कि इसी से कि हम जब फेमिनिस्ट फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, नारीवादी सोच के बारे में बात करते हैं, तो उसमें हम स्टेट के साथ कैसे नेगोशिएट करते हैं, the way, what are the different ways in which feminist movements and feminists have been trying to negotiate and navigate the state. ये बहुत कब से बरसों से ये एक टूल रहा है feminist movements के लिए और feminist के लिए. This has been a tool for feminist movements and feminists to engage and navigate with the state and negotiate with the state. So the next session that we have on the coming Saturday is this, feminist movements and the state. So the details of the session of the panel of the moderator and speakers, we will be soon releasing, and we will be talking about it. So please do look forward to the space. And once again, NAPM extends its thanks to everybody who has joined today, and we look forward to the next session. तो NAPM की तरफ से आप सभी को हमारा धन्यवाद, और धन्यवाद तो शायद एक फॉर्मल नोट है, जिंदाबाद ही है, कि आगे जो हमारी बहुत लड़ाइयाँ हैं और हमें बहुत समझने की जरूरत है कि हम कैसे लड़ सकते हैं अपने खुद के स्पेस से और एक कलेक्टिव स्पेस से. So thank you so much for joining.